ये आकाशवाणी है। संसद में आज वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। प्रस्तुत है केंद्रीय बजट पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। This is Akashvani. The Union Budget for 2025-26 will be presented in the Parliament today. We now bring you a special discussion program in Hindi and English on the Union Budget. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. Good morning and welcome to this special program on Akashvani on Union Budget 2025-26, the first full-term budget of Modi 3.0 government and record 8th consecutive budget of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. From farmers to corporate honchos, students to the salaried, women to the self-employed and millions more, they are all waiting for the Finance Minister to open her red Bahi Khata in approximately 50 minutes from now and know whether their wish list has found a place in her budget announcements. I'm Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal and two eminent guests to discuss what could or should be in those announcements and their impact on our economy and us. Amit. नमस्कार। बजट विशेष 2025-26 के बजट विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम अपने स्टूडियो में शिशिर सिन्हा जी का भी स्वागत करते हैं जो हमें सहयोग करेंगे और बजट की बारीकियों को सरल शब्दों में समझाने में मदद भी करेंगे। धन्यवाद। बजट एक पूरी आमतौर पे खाका है कि साल भर में सरकार का जो आर्थिक जगत है या जो आर्थिक खाता बही है वो किस तरीके से काम करेगा, लोगों को कितनी सहूलियतें देगा और खास तौर पे अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति प्रदान करेगा। शिशिर, सबसे पहले आपसे, पिछले वर्षों में अब मोदी सरकार 3 जैसे कि अनुभव ने बताया कि उसका पहला पूर्ण बजट है। सरकार की पहली मंशा क्या होगी या मोदी सरकार की खासतौर पर निर्मला सीतारमण जी की भी कैसी मंशा होगी कि वो जो खाका पेश करें उसमें क्या परिलक्षित होगा, कहां तक दिशा दिखाई जाएगी और सरकार वृद्धि दर को, आर्थिक विकास दर को जो पिछले समय में थोड़ी सी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू फाइनेंशियल डेफिसिट में दोनों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राहत की बात है, मुद्रास्फीति महंगाई दर में काफी राहत की बात है। सरकार के पास कितना रूम होगा और किस दिशा में सरकार बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां लगातार बजट है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। वह तो पिछले साल ही बन चुका था, अब ये 8 हो गया है और देश में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो श्रेय है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी को जाता है जिन्होंने 10 बजट पेश किए थे। लेकिन उनका जो रिकॉर्ड था वो था कंसेक्यूटिव बजट के मामले में निर्मला जी से कम रहा है। तो अब ऐसे में चुनौतियां और भी बढ़ जाती है क्योंकि जब आप इतने बजट पेश कर चुके होते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी के समय में देखिए 3 बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी यह है कि विकास दर को हम कैसे और सस्टेन करें। आप देखिए कि अगर आप फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट अगर आप देखेंगे जो कि 2024-25 का 7 जनवरी को जो जारी किया गया था उसमें 6.4% बढ़ोतरी की बात की गई। कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें 6.3 से 6.8% के बीच के विकास दर है। इसका अगर मैं मीडियन रेट लूं जो 6.55% आता है। अगर बीते साल का इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो वहां पे मीडियन रेट 6.75% का था। अब दिक्कत यह है कि एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं आंकड़ों में बहुत चला जाता हूं मैं तो कई बार श्रोताओं को लगेगा कि हम इतने आंकड़ों की बात क्यों कर रहे हैं। चलिए हम इन आंकड़ों को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, लेकिन अभी हमारा जो अगला लक्ष्य है चाहे वो $5 ट्रिलियन का हो, $7 ट्रिलियन का हो, $10 ट्रिलियन का हो और 2047 तक जो है वो विकसित भारत के लक्ष्य की बात है। अब वहां पर अगर आपको विकास की गति बनाए रखनी है तो आपको 8% तक विकास दर चाहिए जो कि आसान नहीं है और यही इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती है कि उस विकास दर की रफ्तार को तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। यहीं पे दूसरा मुद्दा आता है। शिशिर, 1 मिनट मैं आपको बीच में टोकूंगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 8% की औसतन विकास दर बेहद जरूरी है अगर हमको 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है। लेकिन अगर हम
भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, वैश्विक परिस्थितियों को देखें, तो ऐसे दौर में क्या हमें थोड़ी सी हम राहत की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद भी अगर हम इस वृद्धि दर को हासिल कर पा रहे हैं तो भी उतनी बुरी स्थिति नहीं है? या मैं फिर वहीं आंकड़े पे आ जाऊंगा जी। आप मुझे बार बार आंकड़ों की तरफ ले जा रहे हैं, मैं वहीं आ जाता हूं। फिर 6.4 हो या 6.55 का जो मीडियन रेट है, अगर दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले कहें तो ये सबसे ऊंची दर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे लिए अपनी एक पीठ थपथपाने की बात है जो हमें करना भी चाहिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो हमने लक्ष्य रखे हैं, देखिए जो हो चुका है ना वो अपनी इतिहास है। अब भविष्य क्या है? भविष्य में हमारे पास ये 5, 7, 10 और विकसित भारत का लक्ष्य है। वहां पर जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था कि वहीं पे जरूरत आ जाती है कि आप खर्च किस तरीके से बढ़ाते हैं, और उसमें से जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्च क्या है। हमने पिछले 4 साल के बजट में देखा है कि पूंजीगत खर्च लगातार जो पूरे बजट में हिस्सा हुआ करता था वो लगातार बढ़ा है। और अगर बीते साल की हम बात करें, 2024-25 के बजट की बात करें, तो 11.11 लाख करोड़ जो कि जीडीपी के 3.2% के बराबर की है। अभी के समय में हमारी नजर सबसे ज्यादा इसी बात पर है कि पूंजीगत खर्च आप कितना बढ़ाते हैं, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल यानी कि 2024-25 में बजट के अनुमान के मुताबिक पूंजीगत खर्च नहीं हो पाया है। उसके पीछे एक बड़ी वजह चुनाव है, क्योंकि उस समय आचार संहिता थी तो बहुत खर्च नहीं कर सकते, तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा जैसे कहा जाए कि कोई कोताही बढ़ती गई, ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारी सबसे पहली नजर तो वहां पे है कि आप पूंजीगत खर्च कैसे बढ़ाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खपत बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है। और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत क्या होती है कि लोगों के हाथ में पैसे कैसे हैं। एक आम आदमी के नजरिए से जो हमारे श्रोता आम आदमी के तौर पे सुन रहे होंगे, उनके मन में सबसे पहला सवाल यही होगा कि आज के बाद जो 12:30 1 बजे के बाद मैं और कितने ज्यादा पैसे की उम्मीद कर सकता हूं अपने बजट में। सरकार का बजट जो आ गया सो आ गया, अपने बजट में क्या उसकी जेब में कितने अतिरिक्त उसकी जेब में कितने आते हैं, तो वहां पर आपके आयकर की बात आ जाती है। और तीसरा जो कि बड़ा मुद्दा है वो है आपका फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि राजकोषीय प्रबंधन या राजकोषीय घाटे की बात है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2025-26 में हमने 4.5% के राजकोषीय घाटे को सीमित करना है, और ये आखिरी साल होगा जब आपके पास फिस्कल डेफिसिट का एक नंबर आएगा। आने वाले साल में इसकी परिभाषा बदल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमारी नजर होगी। तो 3 बातें मूल रूप से हो गई। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप पूंजीगत खर्च कैसे करते हैं, दूसरा आम आदमी के हाथ में और पैसा कितना देते हैं, और तीसरा राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है। अभी भी क्या निजी क्षेत्र, क्योंकि सरकारी खर्च तो है बहुत, लेकिन अभी भी क्या निजी क्षेत्र से खासतौर पे इंफ्रा क्षेत्र में उतना खर्च नहीं हो पा रहा, या निजी क्षेत्र उस मामले में आगे नहीं बढ़ पा रहा कि अगर सरकारी खर्च कहीं भी कम होता है तो निजी क्षेत्र उसकी भरपाई कर पाए? आपने कल का इकोनॉमिक सर्वे अगर देखा होगा कि उसमें इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया है कि जो वैश्विक, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि विश्व अलग अलग दरों में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घरेलू बाजार और घरेलू मांग बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए जो ग्रोथ लीवर का काम करेगा वो है निजी क्षेत्र। तो अब तक जो नहीं हुआ वो अपने आप में अलग कहानी है, लेकिन आगे हमको कैसे करना है। और जब अगर सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि निजी क्षेत्र के लिए निवेश करने का एक मौका बनता है। तो इसीलिए मैंने इस बात पर जोर दिया कि पूंजीगत खर्च कितना बढ़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कार्यक्रम में हम अब स्वागत करते हैं उदयन रे का। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस तरह से आम तौर पे उद्योग जगत की उम्मीदें हैं, आम जनता में भी मैं खास तौर पे कहूँगा मध्य वर्ग की जो उम्मीदें हैं, बजट को पूरा करने में सरकार यानी वित्त मंत्री महोदया के पास कितना स्कोप बचता है कि वो मध्य वर्ग की वो उम्मीदें पूरी करें जिससे उसकी जेब में कुछ अतिरिक्त धन आए और उसकी परचेजिंग पावर बढ़े? देखिए, ये तकरीबन एक्सपेक्टेशन तो की जा रही है कि कुछ ऐसे प्रपोजल्स होंगे, प्रस्ताव होंगे जो ये जिसे राहत विद इन कोट्स मिले। तो और हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कई होता है कि जिसे टैंट्रम कहते हैं, बच्चों का टैंट्रम कहते हैं, वो वाली बात सांकेतिक ना हो, वो कहीं ना कहीं तो वो ये टैंट्रम नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, मुद्रास्फीति जो है, कोविड के टाइम से
पूरे विश्व में सब पर असर हुआ है, और स्पेशली अब हम तो एक सर्विसेज इकोनॉमी है, तो सेवाएं जो हैं वहाँ पे आप देखेंगे कोविड के बाद असर पड़ा है। अगर आप सन 20 में जो आप रेस्टोरेंट में जाके खर्चा करते थे या कहीं और जगह में जाके खर्चा करते हैं, वो और आज अगर देखें तो वो आपके जो औसत मुद्रास्फीति है उससे ऊपर है। तो नॉर्मली इतना फर्क पड़ता नहीं था। तो जिसे टैक्स पेइंग क्लास बोलते हैं, जो जिनके पैन नंबर्स हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, तो उनकी एक उम्मीद है, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये मतलब टेलीविजन या रेडियो स्टूडियोज तक ही सीमित नहीं है कि ऐसा होगा। अब सवाल है कि क्या जो अगर आ भी जाता है क्या वो काफ़ी होगा? मुझे नहीं लगता वो काफ़ी होगा, क्योंकि वो एक हिस्सा होगा, और उसके अलावा जो बजट के दूसरे प्रस्ताव होंगे वो अगर मिल के आप अगर देखें तो शायद वो एक बेहतर इवैल्यूएशन होगा, आप आकलन बेहतर कर पाएंगे। And before we take this discussion forward, let's take a look at how markets are, behaving in the early trade today ahead of the union budget. The Bombay Stock Exchange, BSE, and National Stock Exchange, NSE, are open for trading today on account of the presentation of Union Budget 2025-26 by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Lok Sabha. The domestic benchmark indices today opened on a positive note. The Sensex gained 117 points or 0.15% to open at 77,618, and the Nifty 50 rose 37 points or 0.16% to start at 23,546. Meanwhile, both the indices were trading higher in early trade, led by power, utilities, industrials, and realty sectors. The 30-share BSE Sensex added 240 points or 0.31% to 77,740, and NSE 50 increased 66 points or 0.28% when reports last came in. The mid-cap index rose over 0.6% and the small-cap index increased over 0.8% a short while ago. Udayan, the markets are I will not call them that they're very optimistic. They're cautious right now. I mean, there's an increase, but yesterday we saw there was a hefty, almost 800 points. The markets rose, ahead of the union budget. What is your expectation from as we were discussing earlier with Shishir? The markets are, of course, awaiting a lot of, there are a lot of expectations, not just markets. Everyone is expecting a lot. From the market's point of view, what is the expectation from the union finance minister? Well, it looks like that they will. I mean, if you look at logically, if there is money going into the extra money going into the wallets of consumers, people who can spend. If there's extra money getting into companies' balance sheets, so their profitability or reserves or whatever, they have to pay less tax, or there are incentives that are being given, then the markets obviously will react positively to it. But to the listeners of this program, I wonder whether that is what they should be looking at. Okay. So just because there's going to be a budget proposal, will that help a person actually buy a home? Yes. Or retirement or kids' higher education? They are just milestones. Right. So what works brilliantly for people who make a living in buying and selling stocks is not the same for a retail investor. So because they need to do it take small steps one by one, and they have got a very big target ahead, which will only take time, and they have to make the money grow. So for a person who's a retail investor, I think the key part is anything going to change the dynamic? I suspect not, because if you're saying that almost everybody is saying that it's going to be 6.5%, somebody will say 7%. If that is what is going to grow, nobody's talking about less. In the future, in the years to come, it will be more. Then what should you be doing? You should be invested in the stock market and remain invested, and that's what people are doing through regular investments, through mutual funds and other sort of routes. Right. And now let's go over to the Parliament, where our correspondent Bhupendra Singh is with us. He'll tell us what is happening at Parliament. Bhupendra, welcome to this special program. Give us the latest update from what's happening there.
Yeah, good morning, Anubha. Your Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is going to present budget 2025-26 at 11 a.m. in the Lok Sabha. And before the presentation of the budget, the Finance Minister called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan, and she had just arrived at Parliament House. And there was a customary photography at Makar Dwar of new Parliament building. And a few minutes later, now Union Cabinet will meet in a short while from now, where the Union budget will be approved. And after that, she will directly proceed to the Lok Sabha chamber for the budget presentation. And if we talk about the expectation in this year's budget, it is expected that government will keep moving with its infrastructure push, keeping the fiscal deficit under control. And it is also expected that budgetary allocation for several welfare schemes will witness a considerable hike as the housing, education, health, agriculture and women-led development is the priority area of this government. And as witnessed in the previous year also, budgetary allocation for railways is also expected to rise as the government is continuously working to develop a robust railway infrastructure in the country. And if you talk about the middle class, and middle class is also looking at this budget with very high hope and expecting that tax slabs will give them some relief. And yesterday, if you talk about the economic survey, which estimated that country's GDP to grow by 6.4% in the current fiscal, and the growth is likely to range between 6.3 to 6.8% in the next financial year. So, back to you, Anubha. Thank you for that update, Bhupendra. Shishir, as we were discussing earlier, and Udayan also, I'll come to you also. First, Udayan, as Shishir was also discussing, earlier we discussed that last budget, the allocation for infra, because infra is a big focus point of the government. Of course, it has a multiplier effect. So, the government allocated 11.11 lakh crore for infrastructure, and our aim is to become a Viksit Bharat, by 2047. And as we were discussing earlier, that means a sustained around 8% growth in the next 2 decades. Given all this and need for to meet everybody's expectations, to boost, accelerate growth, sustain it, welfare measures, and to contain fiscal deficit, the challenges that, or rather, how is the union budget going to be addressing that, and how much increase do you see in allocation for infra? It's possibly stating the obvious that infra is going to be again a big thrust area. Primarily, Anubha, if you look at what happened, because 2024 there was there was this whole period when the elections were being held and the government spending dipped a little bit naturally. Yes. Now that itself showed up in the numbers, not in a very big way, but you can feel it. So government is clearly taking the leading steps. It's leading the way. At some point, as the economic survey is saying, that it's not as if the private sector is not doing is not into action, but it's not at the forefront. Yes. The government has to start, and infra is the best thing to start. And when you spend on infra, then all the other trickle down, I wouldn't say trickle down, it's a knock-on effect, positive, virtuous knock-on effect, they start happening. So that obviously is a no-brainer. And in a period like this, where there are headwinds, global Yes. headwinds, you're going to face challenges in international trade. You might as well smartly do. These are smart expenditures. See, when you give subsidy, it's a one-time consumption, but a good road will connect people. It will give entrepreneurs ideas. So those are some of the things that happen. These are all textbook Yes. economics 101 kind of stuff that I'm talking right now. So these are all well documented. So you can expect more of that to happen. It will show up in the numbers, and this is also the right time, because you can never be sure. Every time you're going to talk to a private sector person, and they'll say, "Oh, we are going at 75% capacity utilization." Well,
That's been the case for quite some time. So they would say that okay, there isn't enough purchasing power. We are not seeing an uptick in sales, and those and so on and so forth. But sometimes what happens is those are existing players. Sometimes what happens is if you get in first class infrastructure, the new players will come in and they'll disrupt in very, very different ways. It's not necessarily it will be manufacturing, but also the fact that since we have been emphasizing that we want to become a manufacturing hub. Now, without good roads, unclogged ports, all these things, without these you will not be able to do. But Anubha, the last word, if I may, is it's becoming increasingly important that the infrastructure in terms of manpower, in terms of skilled manpower, is very important. You cannot go to that Viksit Bharat target by earning the kind of wages we are earning. So we have to go into skill-based work which will compensate us better, and of course women get excited, they also start participating. All these things will need to happen. चलिए इस बीच में कुछ और जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट को मंजूरी दे दी है और तकरीबन अब से आधे घंटे बाद संसद में बजट भी पेश हो जाएगा। और इस बीच बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को किस तरह की उम्मीदें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। Nagaland has long struggled with one of the highest unemployment rates in India, particularly affecting the youth and the educated individuals. Despite the potential of agriculture and allied sector, as well as tourism to create jobs, they remain largely at subsistence level or seasonal. Thus, one area I expect the budget to focus on is the development of state-specific policies and support to boost these sectors. My name is Rishikesh Kulkarni. My suggestion is that the government takes into consideration digital services which are required for approvals of projects from start to completion are implemented in a very patchy way and nowhere close to the success levels of systems like UPI. So it is my request to the central government to allocate a budget for creating a digital services platform which will solve this issue. My name is Erin Banikikon from Nagaland. One of the major challenges we are facing is that Anganwadi beneficiaries are urged to be digitally linked with Aadhaar in the Portion Tracker app as per Central Ministry guidelines. However, in Nagaland, frontline workers are facing significant challenges due to outdated gadgets. We request the Ministry to allocate upgraded gadgets to ensure smooth operations. I am Chatazo Nienu. Nagaland faces high unemployment due to structural shifts away from agriculture. The high unemployment has resulted in lack in demand, making the issue even worse. And reorienting the infrastructure building and upgrading rural health infrastructure will go a long way in spurring the state's economy. Those were some voices coming in from the Northeast talking about their expectations from the union budget. Shishir, we were talking, Udayan was just talking about, the wages, how the wages, that's another point that the economic survey pointed out yesterday. In fact, our CEA also talked about this gap between the company's profits and the wages that the employees are getting. He has talked about, how that gap has to be bridged. And another very important point that the economic survey has made about the deregulation. Right? They've talked about, it has made a very strong case about deregulation to accelerate and sustain economy, especially for the MSMEs. From that point of view, what are your expectations in terms of policies that may come out in this budget? So when we talk about the deregulation, I will just take you back to the GST, introduction of GST. When GST was introduced way back in 2017, at that time there was also a question that what will happen to the various taxes which the states are implementing and the taxes which are being governed by the central government. But the GST Council managed to make a kind of platform where all the taxes, whether central and the taxes, except a few ones, they have been subsumed. Now the time has come to think about the same kind of a structure for providing a deregulation. Because if you talk about the regulation, whether at the central level or whether at the state level, there are thousands and thousands of regulations. Some of the regulations are very old and that needs to be scrapped. So some of the laws and the rules have already been scrapped, but we need more and more this kind of deregulation. So I believe Economic Survey has given a roadmap how to go about that. Of course, they have not talked about any mechanism how to go about that. In fact, when we talked to Chief Economic Advisor yesterday,
yesterday. He said that state and the center can, on their own, they can think about how to go about this thing. But this is a very good initiative at this moment. At the same time, we talked about the wage and the profit mismatch. You also add one more thing, that working hour. Business Economic Survey has also highlighted that we are counting the working hour on a daily basis, but that should be done on a weekly or a monthly basis. And typically, more than 60 hours is not going to have a very good impact on the mental state of the worker. So along with the wage mismatch, we also have to think about how we can go about the working hour. Of course, these are some of the issues which cannot be resolved just through the budget. It needs a different kind of action from state government, because labor is a state issue. And the center has a power as the what we call as the concurring list only. So they can provide the guidelines, but the main things has to be done by the state government. So budget can talk about this thing, but more action need to be at the central level, as at the state level as well as the local bodies level. शिशिर, जिस तरह से आपने भी बात बताई, देखिए जो ये सारा सिनेरियो बनता है, और अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं और खासतौर पे अगर एमएसएमई की बात करें, उद्योग जगत से एमएसएमई की बात करते हैं, जीएसटी को लेके कहीं ना कहीं उसके ऑपरेशनल इश्यूज अभी भी बरकरार हैं। खासतौर पे मैंने एमएसएमई की बात करी, तो अगर एमएसएमई में सिर्फ एम को हटा दें, एसएमई की बात करते हैं, क्योंकि उनका ढांचा तकरीबन 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच का है, उनके लिए जीएसटी के ऑपरेशनल जो इश्यूज हैं, क्या सरकार उसके बारे में चिंतित है, और क्या सरकार इस बात को समझ भी पा रही है कि वहां पे किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उनको कितनी तरीके की रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं, उसमें अगर एक बार मिसमैचिंग हो जाती है तो कितनी उनको दिक्कतें आ जाती हैं, उसको लेके अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कम से कम जीएसटी ने काउंसिल ने एक चीज तो अनाउंस करी थी कि अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उन्होंने जो पावर्स हैं उसको हायर लेवल पे किया कि आप उन किसी भी व्यापारी को लेवल को लेकर अरेस्ट नहीं कर सकते। इस तरीके की जो चिंताएं हैं, क्या हम बजट में उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की कोई भी चिंताएं सरकार उस पर भी ध्यान देती हुई नजर आएगी? सर, एमएसएमई में टीवी ऐड कर दीजिए, टाइनी यूनिट्स जी। तो ये जो बहुत ही छोटे वाले जो हैं, इनकी भी परेशानी है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको ये समझना होगा कि बजट इसका समाधान नहीं है, जीएसटी काउंसिल के दायरे में आता है। केंद्र सरकार बहुत हो सकता है, जैसे कि पिछले साल के बजट में हमने देखा था कि अगर आपको याद होगा तो पार्ट बी का जो पहला पैराग्राफ था वो जीएसटी के ऊपर था, जो कि अनयूजुअल था। अमूमन ये समझा जा रहा था कि 2017 के बाद से जब से जीएसटी लागू हुआ, तब से बजट में जीएसटी को लेकर बहुत चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे, केंद्र के पास जो है बहुत सारे अधिकार नहीं है। बहुत होता था कि जीएसटी काउंसिल जो उन कानूनों में बदलाव की सिफारिश करता था, उसका प्रावधान फाइनेंस बिल में किया जाता है। अब यह है कि बजट में आप एक इंटेंशन, यानी कि आप अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आपने गिरफ्तारी वाली बात की, उसमें जो अभी बहुत बड़ा जो चेंज हुआ वो जीएसटी काउंसिल का फैसला था कि आप जिस व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं उससे लिखित में आप पूरी जानकारी दें और लिखित में उससे सहमति लेके आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि बजट मंशा जताएगा और वास्तव में अमल जो है वो हम जीएसटी काउंसिल में होते हुए देखेंगे। एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा, होता क्या है कि अगर आपका जो एक दिशा होती है ना, उसका सिर्फ संकेत मात्र भी बहुत बड़ा बदलाव कर देता है, तो इसी से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अच्छा, चलिए उद्योग जगत की किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से, उस पर भी नजर डालते हैं। आकाशवाणी ने बहुत सारे उद्योग जगत के लोगों से बात करी, उनकी क्या उम्मीदें हैं उद्योग जगत की। केंद्रीय बजट, उसमें ट्रेड और इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए, इसके लिए अगर सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड है, रेल, पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ये हमें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होने में हेल्पफुल होगा। दूसरा, इंडस्ट्री को लेबर चाहिए और लेबर को इंडस्ट्री चाहिए, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए और लेबर की डिमांड पैदा करे। इसके साथ में गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी चालू करने पड़ेंगे। Hi, this is Deepti. I think couple of expectations what IT industry would have in general is digital transformation initiatives. We are expecting a 20 to 30% increase in the digital transformation funding. Second would be export incentives. IT service account for 55% of the India services export, contributing over 245 billion in financial year 2022-23. So we are looking to ensure that
the export incentives are increased, so we are more focused towards an export. The third thing could be cyber security and data protection, where global economy and there's a big talk about cyber security spending across the globe. We would like to see a government spending on cyber security to increase at least 25%. 2025 के यूनियन बजट से महाराष्ट्र में व्यवसायों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ खास उम्मीदें हैं। सबसे पहले कौशल निकास की अगर बात करें तो आईटी, निर्माण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कामकाजी लोगों के लिए ट्रेनिंग पर ध्यान देना जरूरी है। एमएसएमई का समर्थन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे और मझले उद्योगों के ऋण, टैक्स में छूट और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मदद मिलना ताकि वे बड़े हो सके और ज्यादा नौकरियां दे सके। मुख्य क्षेत्रों के लिए टैक्स में राहत मिलना भी उतना ही जरूरी है। वस्त्र और कृषि जैसे उद्योगों को टैक्स में छूट मिलना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नए व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान वित्त पोषण और कम नियम और कानून आता है तो ज्यादा रोजगार भी पैदा हो सकता है। शिशिर, वहीं पे लौट कर आते हैं। देखिए, उद्योग जगत अभी भी चाहता है कि उसको जो पूंजी की उपलब्धता है उसकी लागत कम हो, कम लागत पे उसको पूंजी मिले जिससे उसको अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिले। बाकी जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, अगर जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो चाहे किसी भी अन्य विभाग से रिलेटेड हो, ये तो समय के अनुसार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार या जीएसटी काउंसिल या अन्य विभाग इस पे ध्यान दे के उन मुसीबतों को या उन परेशानियों में कुछ न कुछ कमी ला सकते हैं। लेकिन अगर एक ये माना जाए, एक इंडिकेशन कहीं, जैसे कि एक कहते हैं एक कहीं बूस्टअप का एक की छोटी सी उम्मीद अगर कहीं जगाती है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर ये बहुत बड़ा चैलेंज तो है कम लागत में पूंजी उद्योग जगत के लिए उपलब्ध कराना। कितनी उम्मीद जगा सकते हैं कि ब्याज दरों में राहत मिलेगी, पूंजी की उपलब्धता बैंकों द्वारा सभी क्षेत्रों को, सभी उद्योगों को, मैं सिर्फ एमएसएमई की बात नहीं कर रहा, सभी उद्योगों को ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी? दो चीजें यहाँ पर, अगर आपका राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रहता है तो सरकार उधारी कम लेगी, और जब उधारी कम लेगी, जो हमने पिछले 2024-25 के बजट में भी देखा कि उधारी उनकी जो थी कम थी, इसका फायदा ये होगा कि बैंकों के पास अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध होगी जो कि वो उद्योग जगत को मुहैया करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने महसूस किया होगा कि पिछले 15 दिन के भीतर रिजर्व बैंक ने अलग अलग प्रयासों के जरिए बाजार में अतिरिक्त नकदी मुहैया कराने का इंतजाम किया है, क्योंकि बैंकों की परेशानी यह है कि उनके पास जमा की रफ्तार उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से कर्ज देने की रफ्तार है। तो अब वहां पर बैंकों के पास पैसे आए तभी तो वो कर्ज दे पाएंगे और लागत तभी कम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के राजकोषीय घाटे पे नजर रखनी चाहिए, उधारी के आंकड़े पे नजर रखनी चाहिए, वो कम होगा, उद्योग जगत के लिए पूंजी का इंतजाम आसानी से हो पाएगा। दूसरी ओर हमें यह ध्यान में रखना है कि 7 तारीख, हम सिर्फ 1 तारीख को ना याद रखें, 7 तारीख को भी याद रखें जब रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा और उसमें नकदी बढ़ाने के क्या उपाय कर सकता है, ब्याज दर में कमी करने का रास्ता कैसे कर सकता है, क्योंकि पिछले 10 बार से हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ बदलाव हो। अब एक बदलाव की उम्मीद बनी है क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं 6% के नीचे है और उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें और कमी आएगी। तो शायद ये दोनों को मिलाकर के आप देखें कि 1 तारीख को राजकोषीय घाटे को लेकर के क्या होता है और 7 तारीख को ब्याज दर को लेकर के क्या होता है। तो जो मूल आपका सवाल है उससे उद्योग जगत के लिए पूंजी का इंतजाम और वो भी किफायती दर पर पूंजी का इंतजाम संभव हो पाएगा। Udayan, agriculture has been the focus of this government. Our finance minister has also talked, in the last budget, she said the 4 pillars were farmers, poor, women and youth. So if we talk about agriculture, now the economic survey is saying that in this financial year it is expected to grow by 3.8%, but it has talked about the various aspects of the agriculture, how there is a need to, wean the farmers away from overproduced crops. It has talked about the climate changes that the farmers are facing. So what is your expectation? Because as of now, and on an average, agriculture has been getting something around between 3.5 to 5%. On an average, 5% allocation is there. What is your expectation for the farming for the agriculture and allied sectors? Some kind of a fund for to make farming future ready? Well, those things have been there, Anubha, to be honest, and you can expect more of the same. But it will be very interesting as far as a observer. I'll be very interested in knowing what the proposals are going to be under the head. This is a very defined head of enhancing rural income.
Yes. Now that has been the talk, and that is clearly a challenge. And those overproduced crops, they're one of the reasons. Yes. So what can be done to actually do that? It's not as if people don't know what are the various things, what are the various outcomes that have to be achieved. But these are tough nuts to crack. Edible oils is a tough nut to crack. Irrigation, we still depend on the weather gods. Yes. And I'm sure I haven't really gone through the economic survey that well. I'm sure a mention must have been there in terms of how things can change if the weather is right and if it's not right. So for a country as large as us, with people as many as we are, this is not, we wouldn't want to be dependent on weather. So we can do better, and we have been doing better. I mean, if you look at how agriculture has been, even in the worst economic conditions, they have delivered so well. This is one of the agriculture, in fact, is one of the areas which doesn't get the kind of praise that it deserves. So I think it's worth spending a couple of seconds on that. But I would be very interested in that, and I would be interested in seeing in terms of infra in agriculture. So if it's rural roads, if it's irrigation, getting some of these things which are not being used, irrigation facilities, how can this be done? And of course, how can the produce get a better result outcome for farmers? Those would be very interesting. They would be there. They're always there. It's not as if things have not been happening. But the scale of our problem, the challenge is so big. With so many of us. And a country like, we talk about supply chain resilience. I mean, this is the first port of call. You cannot be anything but self-sufficient in food, given the kind of things that we are seeing, and that's where it becomes so much important. And now, at this point, let's, Kashwani spoke to some people about their budget expectation for tax and agriculture. Let's listen to that. बजट में टैक्स मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई जितना करेंगे, छोटे आदमी भी अपना रिटर्न खुद भर सके, ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. कॉम्प्लिकेशंस बहुत है और जो रिलीफ लेने की है उनके लिए भी बहुत है. ऐसा है तो इतना लेगा, तो उससे कम सिंपल बना दे. तो एनी ऑर्डिनरी मैन कैन फाइल हिज रिटर्न विदाउट हेल्प ऑफ एनीबॉडी. किसान और कृषि के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले. किसान अगर कोई खास किस्म के उत्पाद पैदा करता है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 25% एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए. किसान को अच्छी किस्म का बीज सब्सिडी पे मिले और उसकी क्वालिटी इंश्योर हो और सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाए. किसान के पास डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो ज्यादा अच्छा है. एग्रीकल्चर मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स पे जीएसटी सबसे कम होना चाहिए. We expect that finance minister will put a lot more money to Indian sport as well as for development of infrastructure. Because when India is looking at their hosting 2036 Olympics, and India needs to prove that it is a world beater. India can be economically emerging superpower. At the same time, India should also should ensure that they are also emerging superpower in sports. This is how the world order is today. शिशिर, आपके पास आना चाहूंगा. मध्य वर्ग की सबसे पहली और सबसे बड़ी और शायद एकमात्र उम्मीदें यही होती हैं कि बजट में कर राहत के तौर पर उसको क्या मिलने वाला है. शायद उसका एक सूत्री कार्यक्रम होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वेतनभोगी वर्ग है वो सबसे बड़ा करदाता वर्ग भी शायद हो सकता है. उसको कितनी राहत देने की उम्मीद की जा सकती है? और अगर हम इस उम्मीद के पीछे जो भावनाएं जगी हुई हैं वो इसलिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत अपने संकेतों में कहा था कि शायद उनके लिए अच्छे दिनों की आस लगाना अब दूर की कौड़ी नहीं. देखिए, पिछले कई वर्षों से बजट सत्र की शुरुआत जब होती रही है और प्रधानमंत्री जो एक कस्टमरी ओपनिंग रिमार्क देते रहे, कल पहला मौका था जब उन्होंने मां लक्ष्मी
को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मध्यम वर्ग पर बनी रहे। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संकेत था कि इस बजट में इस वर्ग के लिए हम कुछ बड़े राहतों की उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए इसके दो फायदे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में दो तरह के चक्र चलते हैं, एक होता है सुचक्र, एक होता है दुष्चक्र। सुचक्र में क्या है कि एक अच्छे से दूसरा अच्छा, और दुष्चक्र में है कि एक बुरे से दूसरा बुरा। हम अभी बात करेंगे सुचक्र की, कि अगर आप लोगों के हाथ में पैसा देते हैं, वो खपत करेंगे, मांग बढ़ेगी, कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी तो रोजगार के नए मौके बनेंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। तो ये जो सुचक्र है, जब हम लोग 6.5%, 7% के विकास दर की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये जो वर्चुअस साइकिल है, जिसको हम लोग सूचक्र कहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर मध्यम वर्ग को ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि पिछले 7 बजट में मध्यम वर्ग के हाथ में बहुत कुछ आया नहीं है। हर बजट के बाद अगर कोई एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा निराश होता रहा है, वो मध्यम वर्ग है। हालांकि सरकार ज़रूर कहती है कि हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज किया, हमने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में चेंजेस किए, वो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल सही बात है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी भी उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। उदयन, अब यहाँ पे मैं आपको लेकर आना चाहूँगा, अगर आयकर में कुछ भी बदलाव होते हैं, कुछ भी राहत मिलती हैं, क्योंकि मध्य वर्ग की मैंने खासतौर पे बात करी थी, मध्य वर्ग को ऊंची ब्याज दरों पे EMI का भुगतान करना पड़ रहा है, और आमतौर पे मध्य वर्ग जो होता है इसके मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, वो कभी भी EMI में चूक आमतौर पे नहीं करता। तो बैंकों के लिए भी इस तरीके के वर्ग का, इस तरह के ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे उसको कुछ राहत मिलती है तो कितनी उम्मीद, जैसे कि शिशिर ने कहा कि 1 तारीख के बाद 7 तारीख के लिए भी उम्मीदें बचा के रखिए। तो 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा, क्या ये जो आयकर में जो पिछली बार एक नई रिजीम की भी बात की गई थी, दोनों रिजीम में क्या सरकार वाकई निश्चित तौर पे गहनता से सोच रही है कि हम पुरानी रिजीम में भी कुछ और लोगों को राहत दें, या किस तरह का और करें? क्योंकि बचत को बढ़ाना या बचत को भी कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करना, उसमें सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, मेरा थोड़ा रेडिकल व्यू है इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई स्कीम इसलिए बनाई गई कि पुरानी स्कीम को खत्म किया जाए। तो अब सवाल यह है कि इस बार किया जाएगा कि अगली बार किया जाएगा। और अगर सच पूछे तो मुझे लगता है कि ये खत्म हो ही जाना चाहिए पुराना। और उसके कारण ये है कि आप एक पाइप बना रहे हैं, वहाँ से एक पाइप साइड से निकल रही है, दूसरी पाइप साइड से निकल रही है, फिर ऐसे में ना टैक्स रेवेन्यू आप निकाल नहीं सकते दूसरे। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपके एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है पर करदाता बहुत कम है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको राहत नहीं मिलेगी, पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो आप कह रहे हैं कि अगर वो स्लिप अप दिखता है मार्केट को, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे माहौल में वो इसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे। दूसरा है कि आपके एक सर्टेन कंट्री में एक नए एडमिनिस्ट्रेशन आया है जो हर रोज कुछ नया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे जैसे सरकार जहाँ हमारे लिए भी काफी संकेत हाँ, तो वो उसके लिए यू हैव टू कीप योर एम्युनिशन पाउडर ड्राई, तो वो भी करना है। तो जो भारत के जो वित्त मंत्री हैं जो 8वीं बार पेश कर रही हैं, ये इट्स नॉट अ सिंपल जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, स्पेशली पिछले कुछ सालों में जो चैलेंजेस आए हैं। तो आपको राहत तो दिखेंगी, पर जब आप माइक लेके जाएंगे पब्लिक के पास, मुझे नहीं लगता सब खुश होंगे, और वो सबको खुश करना मुश्किल भी होता है। पर अगर एज अ लार्जर पीस, मतलब पूरे सम टोटल में देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि लोग जो निराश होते रहे वो उतना निराश होंगे। पर हाँ, कई लोग ऐसे होंगे वो यही कहेंगे कि हम तो ये सोच रहे थे, ये नहीं हो पाता है। चलिए, बड़े अगर वर्ग की बात करें खास तौर पे, और आपने कहा कि इनकम टैक्स की, आयकर की जो पुरानी रिजीम है या पुराना जो धारणा थी, और हम अगर नई स्कीम में अगर आते हैं, क्या वहां पे सरकार एक काफी महत्वपूर्ण या कुछ इस तरह का बड़ा कदम उठा सकती है जैसे फौरी तौर पे ही सही सरकार को बचत में भी बढ़त की उम्मीद हो जाए, और वेतनभोगी या जो करदाता है उसको भी उसकी उम्मीदें भी लगभग पूरी होती हुई सी नजर आए? क्या इस तरह के कदम की उम्मीदें हम कर सकते हैं? कर तो सकते हैं,
और शायद होगा भी। नहीं, लेकिन करने के साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री के पास कितनी स्कोप बचता है, कितनी गुंजाइश बचती है अगर मैं झोली में। अगर आप मुझसे पूछें, मैं माइनॉरिटी में जरूर हूँगा, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में हूँगा। मुझे लगता नहीं कि उनके पास इतनी गुंजाइश है, क्योंकि आप ऐसे आप 6.5% के हिसाब से आप बोल रहे हैं, वो 8 तो नहीं है, 8.5 तो नहीं है, हमें 8.5 चाहिए। विकसित भारत होने के लिए 8.5 भी कम है, ठीक है ना। तो वो नहीं है, आपको इंफ्रा में भी देना है, कुछ और भी करना है, बोरो भी नहीं करना है, स्टेबल रखना है। अगले कुछ महीनों में और भी चैलेंजेस होंगे, आपके करेंसी में डिप्रिसिएशन हुआ है, तो ये आप पब्लिक को जाके तो नहीं बता सकते कि ऐसा हो रहा है, वहाँ का हो रहा है। और कई जो इवॉल्व इकोनॉमिस्ट होते हैं वो जाके, अर्थशास्त्री जाके ये समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि फेल्ड है। तो ये नहीं हो पाएगी। बट लकीली यहाँ पे पॉलिटिक्स को ये सरकार समझती है और उस हिसाब से वो एक प्रस्ताव लाएगी। और मुझे लगता है कि मोर और लेस इसमें पीपल विल कम अराउंड। शिशिर, मैं आपको यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा। देखिए, उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन मध्य वर्ग की चुनौतियां भी समझिए। उसको बच्चों की शिक्षा पे भी अपना खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा देना है, उसको अगर अपने मकान की जो किस्त है उस पे भी ज्यादा पैसे अदा करने हैं, उसको अगर कार लोन या व्हीकल लोन कोई है उसकी किस्तों में बढ़ोतरी अवश्य हुई है पिछले दिनों के मुकाबले। क्या ऐसे समय में वित्त मंत्री इन सारी चीजों पे कहीं राहत, मैं 1 तारीख और 7 तारीख अगर दोनों की उम्मीदें आपसे पूछूं? Shishir, before you answer that, because Amit is talking about, how the middle income group, has to pay for the children's fee and tuition fee and everything. Let's listen to what are the expectations of the people on education and health from this union budget. My name is Manisha Anand. I'm really looking forward for this budget. It should be focused on women health, child health and education. Naturally, the social reform will happen. My name is Shailesh Kumar Chaube. There is a need to increase provisions to actual expenditure on education because we have to cope up with the national education policy. I feel the education sector continues to aim 6% GDP allocation in the education. So we expect the government to increase the collaboration with the industry on internship, skill-based training and investment in technology-driven solutions. People in India in general and stakeholders of higher education in particular have certain expectations on the budget. The gross enrollment ratio should be enormously increased in proportion to the dynamic demographic profile of the country. The education cess levied in income tax is not properly transferred. The budget should provide adequate grants for education planning, education infrastructure and academic administration. केंद्रीय बजट से अरुणाचल प्रदेश को विशेष अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक अनुदान या यूं कहें कि आर्थिक सहायता के साथ साथ जो ढांचागत विकास है शिक्षा के क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं हैं और कॉलेजेस और स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं अभी भी लोगों को बाहर की तरफ ज्यादा देखना पड़ता है। अतः सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर या सर्किल स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की और वहां पर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की सुविधा के लिए बजट में प्रोविजन करने की आवश्यकता है। From the forthcoming budget in the field of education, we think that teacher training programs, digital education initiatives and improvements to school infrastructure should be included. It is imperative to focus on skill-based education, particularly in STEM fields, to prepare students for a rapidly evolving global economy. Shishir, very quick comment from you on... बिल्कुल, मैं अमित जी की बात का जवाब दे दूं कि देखिए, कहते हैं ना कि महिलाएं से बड़ी कोई अर्थशास्त्री नहीं होती है। घर का अर्थशास्त्र अगर कोई समझता है तो महिला समझती है। निर्मला सीतारमण जी भी एक महिला हैं। और जो आपने मुद्दा उठाया कि लोगों के खर्च बढ़ रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, तो संसाधनों का आवंटन एक कितने तर्कपूर्ण तरीके से किया जा सकता है वो बेहतर समझते हैं। और मैं उदयन जी की बात से मैं उदयन जी के साथ हूं उस माइनॉरिटी में जो ये इस बात की वकालत करता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप ऊंचे विकास दर की बात कर रहे हैं और वैश्विक एजेंसियों की नजर हम पर है कि हम किस तरीके का बजट बनाते हैं। तो आपको एक संतुलन बनाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप
झोली जो है, थैली जो है, बटुआ जो है वो पूरी तरह से नहीं, मैं इस बारे में एक बात सिर्फ ये कहना चाहता था, जब हम कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को हमने ड्रास्टिकली कम किया था, हमने उसको कहा था कि 22 से 25% सरकार लेकर आई थी, वहां के बावजूद जब इस वर्ग को, जो वेतनभोगी या मध्य वर्ग है, उसको आयकर के दौर पे इतनी बड़ी राहत नहीं मिली थी। दोनों में सामंजस्य बिठाने की उम्मीद अगर करते हैं तो कितना बेईमानी। देखिए, उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन रास्ता निकालना तो रास्ता निकालना, मैं वही कह रहा हूं कि अभी के समय में न्यू टैक्स रिजीम को आप और कैसे आकर्षक बना सकते हैं, क्योंकि देखिए लगभग 74% असेसी ऑलरेडी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। इसके पीछे भले ही आप ये कहें कि 2024-25 से चूंकि वो एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन चुका है, तो शायद इस वजह से ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो बचत और निवेश के लिए केवल कर छूट की वजह से ही करते हो, ये धारणा को काफी हद तक एक चोट पहुंची है। हाँ, अब लोगों के हाथ में पैसा अतिरिक्त पहुंचे, वहां पर आप न्यू टैक्स रिजीम में क्या उपाय कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। And just a few seconds to go before Finance Minister Nirmala Sitharaman presents her 8th consecutive union budget in Parliament. Let's have a quick look at how the markets are behaving at this moment. Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty were trading with modest gains in morning trade today ahead of the presentation of the union budget. The 30-share BSE Sensex gained 212 points or 0.27%, and the NSE Nifty added 68 points or 0.3% to 23,576 when reports last came in. The broader market at the Bombay Stock Exchange was also trading in positive territory. The mid-cap index rose over 0.6% and the small-cap index increased almost 1% a short while ago. And just like I said, a few seconds to go. Very quick comment, last comment before we go live to listen to what Union Minister Nirmala Sitharaman has to, announce in the budgets. Udayan. Well, expect fiscal discipline. You're not going to be disappointed with fiscal deficit figure. You're going to expect a lot of infra spending, a lot of focus on AI, skill-based education, and you are going to get some good news on tax, income tax, which Amit has been talking about. चलिए हम अब सीधे चलते हैं संसद में, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री बजट भाषण अपना शुरू करने वाली हैं। आइटम नंबर 1, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century,
century. Continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices. 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity.
The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision
for the textile sector. This will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the Fund of Funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new Fund of Funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A
new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds.
broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana
This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households, representing 80% of India's rural population, have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards
to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list.
following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth.
A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective
is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer,
rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports
for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address
I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination,
I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective
of our government's trust on the middle class taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility. अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट प्रस्ताव 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जैसे कि उम्मीद थी उन्होंने बहुत बड़ी छूट की घोषणा की है। संभवतः यह सभी के लिए सभी खासतौर पे जो 12 लाख तक की जो आय वाले कर्मचारी हैं या वेतनभोगी लोग हैं उनके लिए 12,75,000 रुपए तक के लिए कोई कर का ऐलान नहीं है। इसमें उनको बहुत बड़ी राहत की बात की गई है
और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य छूट भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया है, खासतौर पे मध्य वर्ग के लिए जिस तरह से की उम्मीदें थी और बहुत इस तरीके की उम्मीदें लगाई गई थी कि मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है, वहां पे कहीं ना कहीं वित्त मंत्री खरे उतरती हुई नजर आई हैं। लेकिन इन सब चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। अभी हाल ही में जिस तरह से हमारे पास ये बजट प्रस्तावों की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, हम उन सभी प्रस्तावों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे नए प्रस्तावों पर भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने बातें बताई हैं। अनुभव? Yes, Amit. Like the finance minister at the beginning of the budget announced a 6-year mission for Atmanirbharta Impulses, which is going to be launched. And as in the last budget, the farmers, women, poor and youth, there were the 4 pillars. She added the MSMEs and investment and export as the 5th and the 6th pillar in this particular budget. There is, one of the announcements in her budget was that there's going to be up to 5 lakh loan via Kisan credit card. So the credit limit for the Kisan for farmers is being increased. She's announced certain measures for the MSMEs as far as their credit guarantee is concerned. Credit guarantee cover for the loans given to them is concerned. She has raised those limits. And then also, of course, there are, she's talked about investment as a third engine of the budget. She's announced a manufacturing mission to be set up to encourage manufacturing in the country. India, their government is going to concentrate on, making India as the center for toy making in the world. So there are plans to make India toy manufacturing center of the world. टीडीएस आयकर की ही हम अगर खासतौर पे हम बात करते हैं तो आयकर में जो टीडीएस और टीसीएस यानी स्रोत पर आयकर की जो कटौती थी और कुछ तरह की जो खरीदारी पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता था, उस मामले पे भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ी राहत की घोषणा करी है। यह समझा जाए कि कराधान के प्रस्तावों को उसमें सुधार किया, उसको सरलीकृत किया है। Amit, let's not forget a very important announcement that she's made. The Insurance department, the sector, for till now there was a 74% FDI that was allowed in this sector. Now that limit has been raised to 100% FDI is going to be allowed in this particular sector, which has been a demand for quite a while. हालांकि इसमें एक चीज उन्होंने और कही है कि सारे जो प्रीमियम हैं, जो इस तरह के जो विदेशी निवेशक आएंगे, जो बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को उन्होंने मंजूरी दी है, लेकिन उनको पूरा प्रीमियम जो है वो भारत में ही निवेश करना होगा। यह एक छोटी सी शर्त रखी जो संभवतः बेहतर भी है और संगत भी है। Yeah, and she's also talked about how, last year when the government brought in the Indian, the Bharat Nyaya Sanhita, and then the Jan Vishwas 2.0, under which, this process of decriminalization of laws is going to continue, and more than 100 laws are proposed to be decriminalized under the Jan Vishwas 2.0. और अभी हम इस चर्चा को यहीं पे शामिल करेंगे और अभी यहीं पे समापन करेंगे, लेकिन इसके बाद तुरंत हम फिर से आपके पास लौटेंगे ये चर्चा को जारी रखते हुए जिस तरह से आज बजट प्रस्तावों पे किया गया है। ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से विशेष बजट बुलेटिन सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में 12 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर के नए स्लैबों की घोषणा की। 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए के स्लैब पर 10% कर का प्रस्ताव। 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आय पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 20% कर। 20 से 24 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% कर के नए स्लैब की घोषणा, जबकि 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर का प्रस्ताव।
परोक्ष करों के अंतर्गत कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव। बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और 1,70,00,000 किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। सरकार दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी। इसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष बल दिया जाएगा। नेफेड और एनसीसीएफ पंजीकृत किसानों से सीधे दालें खरीदेंगे। मखानों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। असम के नामरूप में 12,70,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंडिया पोस्ट का विस्तार एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में किया जाएगा। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और प्रमुख निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी 1% वृद्धि के साथ बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। एनडीए सरकार का लगातार 8वां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्ष में अर्थव्यवस्था के विकास की गति और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान देश की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री ने महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पाराव का कथन साझा करते हुए कहा कि किसी भी देश का अस्तित्व केवल उसके मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है। उन्होंने कहा कि इसके अनुरूप विकसित भारत में गरीबी से मुक्ति शामिल है। उन्होंने कहा कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्रदान करना और बेहतर, सस्ती तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच हमारा उद्देश्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। इसमें विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए ये सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 रुपए होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव हैं। नई संरचना के अनुसार 4 लाख रुपए तक कोई कर देय नहीं होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एक रूपता के लिए टीडीएस के लिए राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है।
इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। कर सुधारों को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीडीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है। माल की बिक्री से जुड़े लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों में औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्ति संगत बनाने के उपाय किए हैं। इनके अंतर्गत 7 दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 शुल्क दरों के अतिरिक्त हैं। बजट में औषधि दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। इसके अंतर्गत मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों को शामिल करते हुए कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और सतत कृषि प्रणालियों को अपनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्ष के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लोगों को कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ में संगठित किया जाएगा। ये बोर्ड मखाना उत्पादक किसानों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से लगभग 8 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के 3 निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12,70,000 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों में कार्यरत पोस्ट पेमेंट बैंक और 2,40,000 डाक सेवकों की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी। इससे अगले 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। पेंशन योजनाओं के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34,96,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 50,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28,37,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है।
बजट में पीएम स्वनिधि योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण, 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई से संबद्ध क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के लिए उपलब्ध कर लाभ एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए अंशदानों के लिए भी उपलब्ध होंगे। पूंजीगत व्यय और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर देश को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना से मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम और अपना लगातार 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में 12 लाख रुपए की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयकर के नए स्लैबों की घोषणा की। 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए के स्लैब पर 10% कर का प्रस्ताव। 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आय पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए की आमदनी पर 20% कर। 20 से 24 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% कर के नए स्लैब की घोषणा, जबकि 24 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर का प्रस्ताव। परोक्ष करों के अंतर्गत कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव। बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और 1,70,00,000 किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए चुने हुए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। सरकार दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी। इसमें अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष बल दिया जाएगा। नेफेड और एनसीसीएफ पंजीकृत किसानों से सीधे दालें खरीदेंगे। मखानों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। असम के नामरूप में 12,70,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंडिया पोस्ट का विस्तार एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में किया जाएगा। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाने और कारोबार सीमा भी 2 गुनी करने का प्रस्ताव। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए और प्रमुख निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी 1% वृद्धि के साथ 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान। अगले 5 वर्ष में युवाओं में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में बच्चों में जिज्ञासा तथा नवाचार की भावना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्ष में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा कि भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वित्त मंत्री ने कहा कि समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पंचवर्षीय मिशन से कपास की खेती में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित बजट में विकास के उपाय गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इनमें कृषि का विकास और उत्पादकता में वृद्धि, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया की गति में तेजी लाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य अगले 5 वर्ष में कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार से हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि करना है। वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बिहार के इस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जलवायु अनुकूल विकास की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ये मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को सहायता प्रदान करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। ये पिछले 10 वर्ष में 65,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ के परिव्यय से शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में लगभग 1,10,000 स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों में वृद्धि की है। यह वृद्धि 130% है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में 75,000 अतिरिक्त चिकित्सा सीटों को जोड़ने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। बजट में सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधि धन उपलब्ध कराने के वास्ते 25,000 करोड़ रुपए की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the special budget bulletin read by Valsa Williams. The headlines. Union Budget 2025-26 proposes no income tax payable up to 12 lakh rupees in new tax regime. Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the first full-fledged budget of third term of NDA government, says for salaried class, this limit to be 12,75,000 rupees. New income tax slabs also introduced. No tax for individuals earning income up to 4 lakh rupees, 5% tax for individuals earning between 4 to 8 lakh rupees, 10% tax for 8 to 12 lakh rupees slab. 15% tax for 12 to 16 lakh rupees income group, 16 to 20 lakh rupees income group to pay tax at the rate of 20%. A new slab of 25% tax introduced for individuals earning between 20 to 24 lakh rupees, earnings above 24 lakh rupees liable to 30% tax. The Finance Minister says budget focuses on growth acceleration, inclusive development, invigorating private sector investments and enhancing the spending power of middle class. Time limit to file updated returns for any assessment year extended from 2 years to 4 years. Tax deduction limit on interest for senior citizens doubled from 50,000 to 1 lakh rupees. Annual limit of 2.4 lakh rupees for TDS on rent increased to 6 lakh rupees.
TCS on remittances for education purposes removed where such remittance is out of a loan taken from a specified financial institution. The budget introduces Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in selected 100 districts to enhance agricultural productivity, crop diversification and facilitate credit benefiting 1.7 crore farmers. Government to launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor, NAFED and NCCF to procure pulses directly from registered farmers. A new scheme proposed for 5 lakh first-time women, SCs and STs, entrepreneurs providing term loans up to 2 crore rupees. A Makhana board to be established in Bihar to improve production, value addition and marketing of Makhana. Kisan credit card loan limit under modified interest subvention scheme enhanced from 3 lakh to 5 lakh rupees. The investment limit for classification of MSMEs enhanced to 2.5 times, turnout limit also doubled to 2 times respectively. Credit guarantee cover for micro and small enterprises enhanced to 10 crore and for well-run exporter MSMEs up to 20 crore rupees. For startups, credit guarantee cover boosted to 20 crore rupees, guarantee moderated to 1% in 27 focus sectors important for Atmanirbhar Bharat. For well-run exporter MSMEs, limit for term loans to be enhanced up to 20 crore rupees. Government to introduce customized credit cards with 5 lakh limit for micro enterprises registered on Udyam portal. Government to set up National Manufacturing Mission in a boost to Make in India initiative. 50,000 Atal Tinkering Labs to be set up in government schools in next 5 years to promote innovation in young minds. FDI limit for insurance sector to be raised from 74% to 100%, announces Finance Minister. Grameen Credit Score framework to be developed to serve the credit needs of self-help group members and people in rural areas. Investment Friendliness Index of States to be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism. Fiscal deficit estimated to be 4.4% of GDP in next fiscal year. Budget 2025 proposes to remove 7 tariff rates as a part of comprehensive review of customs rate structure. Government announces to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic customs duty (BCD). To boost domestic manufacturing of lithium-ion battery, Budget 2025 proposes to exempt 35 additional capital goods for EV battery manufacturing from BCD. Broadband connectivity to be provided at all government secondary schools and primary health centres in rural areas under BharatNet project. New scheme announced for socio-economic upliftment of urban workers, PM Swanidhi scheme for street vendors to be revamped. Government to arrange for identity cards and registration of gig workers of online platforms on the eShram portal. Healthcare under PM Jan Arogya Yojana to also be provided to them. Special window for affordable and mid-income housing, Swami Fund second phase to be launched with an outlay of 15,000 crore rupees for expeditious completion of 1 lakh houses in stressed housing projects. Jal Jeevan Mission extended for 4 years, all rural households to be provided with potable tap water connections. 5 national centres of excellence for skilling to be set up, 500 crore rupees outlay for a new centre of excellence in AI. 6,500 more seats in IITs, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals. New greenfield airports announced for Bihar, support to Western Koshi Canal ERM project to benefit farmers in Mithilanchal region of the state. Government to share PM Gati Shakti data and maps with the private sector. The details. Finance Minister Nirmala Sitharaman today presented the first full-fledged budget of the third term of NDA government. Presenting the budget in the Lok Sabha, the Finance Minister announced that the nil tax slab is now extended up to 12 lakh rupees income. The Finance Minister also said that adding the standard deduction of 75,000 rupees for salaried class, the income of 12 lakh 75,000 per annum will not be taxed.
Ms. Sitharaman also introduced new income tax slabs in new regime of taxation. She said there will be no tax for up to earnings of 4 lakh rupees income. 5% tax needs to be paid for individuals earning between 4 and 8 lakh rupees. 10% tax will be paid for 8 to 12 lakh rupees slab. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced 15% tax for 12 to 16 lakh rupee income group, 16 to 20 lakh rupee income group to pay tax at the rate of 20%. A new slab of 25% tax introduced for individuals earning between 20 to 24 lakh rupees. Earnings above 24 lakh rupees liable to pay 30% tax. She asserted that the new structure will substantially reduce the taxes of middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. As a result of these proposals, the government will forego revenue of about 1 lakh crore rupees in direct taxes and 2,600 crore rupees in indirect taxes. The limit for tax deduction on interest for senior citizens has been doubled from 50,000 to 1 lakh. Similarly, the annual limit of 2 lakh and 40,000 for TDS on rent is being increased to 6 lakh. Ms. Sitharaman said this will ensure reduction in number of transactions liable to TDS, benefiting small taxpayers receiving small payments. The Finance Minister highlighted taxation reforms as one of the key reforms to fulfill the vision of developed India, describing it as a means to achieve good governance for people and economy of the country. The government this year has proposed reforms in personal income tax with special focus on middle class. Presenting her 8th consecutive budget, Finance Minister Sitharaman said the budget is focused on growth acceleration, inclusive development, invigorating private sector investments, and enhancing the spending power of middle class. She said it is based on development in 10 broad areas, focusing on Gharib, Youth, Annadata and Nari. Ms. Sitharaman said this year's budget is focused on agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, and supporting MSMEs. It is also focused on enabling employment-led development, investing on people and economy, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. The Finance Minister announced a program for agriculture sector, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, in partnership with states. She said with convergence of existing schemes, it will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. The scheme is aimed to enhance agricultural productivity, adopt crop diversification, augment post-harvest storage at the Panchayat and block level, and to facilitate availability of long-term and short-term credit. She said this program is likely to help 1.7 crore farmers. The Finance Minister also announced Rural Prosperity and Resilience Program to address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. She said the program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers and landless families. Under this program, in Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered, supported by technical and financial assistance from multilateral development banks. She said the government will launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Central agencies, NAFED and NCCF will procure these 3 pulses during the next 4 years from farmers who register with these agencies. The budget also announced establishment of a Makhana board in Bihar to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. Ms. Sitharaman said in line with the government's commitment towards Purvodaya, the centre will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. Ms. Sitharaman said a national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at strengthening the research ecosystem and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience. She said to unlock the untapped potential of the marine sector, the government will bring in an enabling framework for
sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas with a special focus on the Andaman and Nicobar, Lakshadweep and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, the budget also announced a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming. The loan limit under the modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh to 5 lakh rupees for loans taken through the Kisan Credit Card. The Finance Minister announced to set up a urea plant at Namrup, Assam, with annual capacity of 12.7 lakh metric tons for Atmanirbharta in urea production. She said the services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. She also said India Post will be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs and large business organizations. The budget announced enhancement of investment limit for classification of MSMEs by 2.5 times and doubling of turnout limit also. This will give confidence to MSMEs to grow and generate employment for our youth. The Finance Minister announced that to improve access to credit for MSMEs, the credit guarantee cover will be enhanced. She said for micro and small enterprises, the credit guarantee will be enhanced from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crore in the next 5 years. For startups, credit guarantee will be enhanced from 10 crore to 20 crore. Guarantee fee for startup being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors, important for Atmanirbhar Bharat. For well-run exporter, MSMEs limit for term loans will be enhanced up to 20 crore rupees. The Finance Minister announced that the government will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. She further said that the alternate investment funds AIFs for startups have received commitments of more than 91,000 crore rupees. These are supported by the Fund of Funds set up with a government contribution of 10,000 crore rupees. Now a new Fund of Funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. Ms. Sitharaman also announced that a new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. Ms. Sitharaman said to enhance productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate turnover of 4 lakh crore rupees and exports of over 1.1 lakh crore rupees. She also announced that building on the National Action Plan for Toys, the government will implement a scheme to make India a global hub for toys. The government also announced the setting up of a national manufacturing mission covering small, medium and large industries to give a boost to Make in India initiative. It will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. The Union Budget also proposed the setting up of 50,000 Atal Tinkering Labs in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. The Finance Minister announced a new scheme for the socio-economic upliftment of urban workers. Besides, the PM Swanidhi scheme for street vendors will be revamped with enhanced loans and UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit. Ms. Sitharaman declared that gig workers of online platforms will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. They will also be registered on the eShram portal and provided identity cards. The Jal Jeevan Mission is proposed to be extended for 4 years. All rural households will be provided with portable tap water connections, expanding coverage from the present 80%, she said. The General Budget also proposes the setting up of 5 national centres of excellence for skilling with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The Finance Minister said capacity will be augmented in 5 IITs started after 2014 to add 6,500 more seats. She proposed an outlay of 500 crore rupees for a new centre of excellence in AI. Ms. Sitharaman said 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals. Besides, daycare cancer centres will be set up in all district hospitals in the next 3 years.
of which 200 such centres will come up in the next financial year. The government will implement Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for school and higher education, she said. With an aim to create more jobs in the tourism sector, the finance minister said top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. The government will provide mudra loans for homestays, organize skill development programs for youth, and focus on Buddhist sites. The union budget proposes setting up a urban challenge fund with an outlay of 1 lakh crore rupees to create and modernize infrastructure in cities, 10,000 crore rupees allocated for next fiscal. The finance minister said a nuclear energy mission will be formulated for research and development of small modular reactors, SMR, with an outlay of 20,000 crore rupees. At least 5 indigenous small reactors will be operationalized by year 2033. Under PM Gati Shakti, the government will start a new national geospatial mission to modernize land records and facilitate urban planning and design of infrastructure projects. The second gene bank will come up with 10 lakh germplasm lines for future food and nutritional security. The general budget also proposed rationalization of tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. It also introduces increase in threshold amounts for tax deduction for better clarity and uniformity. The threshold to collect tax at source, TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, LRS, has been increased to 10 lakh from 7 lakh rupees. The finance minister said at present both TDS and TCS are being applied on any transaction relating to sale of goods. However, to prevent such compliance difficulties, the government has proposed to omit the application of TCS on transactions relating to goods sale. Ms. Sitharaman said the scope of safe harbour rules is being expanded in order to reduce litigation and provide certainty in international taxation. In good news for senior citizens, the government has announced exempt withdrawals for individuals having very old National Savings Scheme accounts made on or after the 29th of August 2024. It also proposed similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. The finance minister said the Vivad Se Vishwas scheme introduced in July last year to resolve income tax disputes pending in appeal has received a great response, with nearly 33,000 individuals having availed the benefit of the initiative to settle their disputes. She said that revised estimate of the fiscal deficit in the current financial year is 4.8% of GDP. Ms. Sitharaman stated that the fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP in the next fiscal year. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The finance minister further stated that presently the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalise provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, Budget 2025 proposes to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment. She also proposed to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. And that is the end of this special budget bulletin. केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 के विशेष बुलेटिन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चर्चा हम करेंगे आज के बजट प्रस्ताव पे। अभी से थोड़ी देर पहले ही संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्ताव किए हैं उसमें सबसे मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो आयकर में मध्य वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की गई है, जिसमें फौरी तौर पे हम जो समझ पा रहे हैं उसमें यह है कि अगर आपकी कुल आय 12 लाख रुपए तक है, जिसमें किसी भी तरीके का कैपिटल गेन का से संबंधित आय नहीं है, तो आपको अगले वित्त वर्ष से कोई भी
आयकर नहीं देना है, ये सबसे बड़ी है। और इसी में अगर आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं तो आपके लिए यह सीमा 12,75,000 रुपए होगी। हमारे साथ फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे, मैं अपनी सहयोगी अनुभा रोहतगी का, साथ ही हमारे पास दो विशेषज्ञ भी हैं, शिशिर सिन्हा और उदयन रे। एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। किस तरह से आंकेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री का 8वां बजट? कितनी बड़ी घोषणाएं, क्या 8 बड़ी घोषणाएं कुछ ऐसी हैं जिस पे आप बता सकते हैं? जो मैंने 2 चीजें करी क्योंकि वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों के लिए तो राहत की बात थी और भी बहुत बड़े वर्ग के लिए राहत की बात थी। शिशिर, 8 बड़ी घोषणाएं तुरंत तो हम नहीं वो नंबर 1 तो, लेकिन कोशिश करते हैं 8 लाने की। सबसे पहली चीज जो कि है कि आपके जो इनकम टैक्स के स्लैब बदले गए हैं, न्यू टैक्स रिजीम, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 12 लाख और जो वेतन भोगी उनको 13.25 लाख रुपए तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना, यानी कि रिबेट बढ़ा दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी घोषणा ये है। दूसरी जो बड़ी घोषणा जो टीडीएस और टीसीएस के यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में जो बदलाव किया जाता है, और उसमें खास तौर पे मुझे लगता है कि जो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट की सीलिंग जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए और आम आदमियों के लिए 40,000 रुपए से, मतलब जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 40,000 से 50,000 रुपए किए गए, तो ये दूसरी बड़ी घोषणा है। तीसरी जो अगर आप देखेंगे तो टीडीएस और टीसीएस की जो दरें हैं उसमें जो बदलाव किया गया है वो भी आप बड़ी घोषणा कह सकते हैं और उसमें काफी हद तक राहत मिलेगी। Shishir, I will interrupt you here because we have been joined now by Jyoti Vij, Director General of FICCI, for her reaction on the Union Budget. Ms. Vij, welcome to the program. What is your initial reaction on the Union Budget 2025-26 presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman a little while ago? So I would say that this is one of course, continuity. For many years they've been driving a lot of themes, and they continue to have laser focus on all of that. Whether it is the ease of doing business, deregulation, etc. But the sharper focus also on manufacturing this time with mission manufacturing, and the continuing focus to provide higher employment, and hence the sectors that they're focusing on are very, very employment intensive sectors like the leather, the footwear, the textile, toys, etc. So there is continuity of that. I think sustainability and technology remain cross-cutting themes for many budgets now, and this time as well. In several areas, they have kind of continued to focus on that. Infrastructure development, again, is a very, very important focus, which again, last 4-5 years has been continuing. I think very interesting point is that they are looking at incentivizing states in implementation of some of the reforms. Pending the details, I think it seems like a good initiative. So we see how it pans out. And of course, rural prosperity, very, very sharp laser focus again, with many aspects on the agriculture, plus also on the rural employment as well. That's very, very important. So right from the grassroots, from the rural, right to, the high level innovation that is required to sustain and achieve, to break through the middle income trap. I think all those aspects are very well touched in the budget, and many of the asks of FICCI do find place in this budget as well, which is very, very heartening, especially on the tax compliance issues, etc. But very broadly, with the investments and the continuing focus on the investment by the government, plus given that they have given a massive boost through the tax rationalization to the disposable income in the hands of the middle class, which can help propel consumption. All of this can definitely, help in bringing in the private investment, which is a big need of the hour. Ms. Vij, thank you so much for sharing your views with Akashvani. Shishir, as we just heard, the DG FICCI, Jyoti Vij, the big point that she's making here is that there's a massive boost that the government has given through tax rationalization, therefore giving more spending power directly into the hands of people, which is going to have, again, a cascading effect on the investment by private sector. How do you see that? So the things which we were talking during the pre-budget, session about the virtuous cycle, how to boost the consumption, and that will have a major multiplier effect. I'm not using the word cascading because
because normally cascading is used in a very negative connotation. Right. So I will use the term. Corrected. Yes. No, it's okay. Yeah. So I will use the term multiplier effect. Yes. And the other thing is that when the companies are producing more, when the consumers are consuming more, a part of that is coming back to the government. So when the government is spending, say, 1 lakh crore, over 1 lakh crore through the direct tax benefit, the part of will come back as the indirect tax in the forms of GST or in the form of other taxes. So I believe that what is important thing is that it is not going to have more revenue foregone kind of thing. The net revenue foregone will be much lesser on the one hand. At the same time, people will have more money in the hand because at this moment we need higher consumption. Yes. Higher consumption is the need of the hour, because when we saw 6.4% growth rate for the fiscal year 24-25, and when the second quarter growth rate was lesser, so that all the data, one thing which was very common, that was the lower consumption, especially in the urban area. The good thing is that the rural consumption is picking up, but the urban consumption is either stagnant or going down. So I think this kind of measure is going to boost the consumption, which in turns will boost the production, which in turns will boost the employment, which in turns will boost the more money in the hand of the people, and at the end of the day, government will also get a part of that. Udayan, do you have to add anything to what Shishir has said, in terms of your first reactions to the budget that has been announced? Yeah, that is clearly the standout feature. I mean, it resembles a 50 over match at the last 2 overs when people slog and hit the ball out of the park. So I think the finance minister actually reserved the big hitting towards the end. But yeah, there's absolutely no doubt that's how the linkage is working. That you want to give more money in the hands of people, and very, very interesting. A lot of the people who get affected by things like inflation and things like that, especially the senior citizen, people who rely on interest income, who are relying on rental income, which is basically fixed income. Yes. Fixed income tends to get impacted more by inflation. So and even something like a TDS, somebody will say that you still have to pay the tax. That's true, but the moment the money goes out of your system, it elicits a completely different response. But apart from that, it's not as if there's this whole danger that other very, very good and interesting proposals might just get eclipsed by this huge thing. As in the pre-budget presentation program, you mentioned that people tend to focus on tax rates, but there are lots and lots of interesting things that have got the proposals are there as far as MSMEs are concerned. Yes. Tourism, I thought that was very interesting. I thought proposal relating to shipbuilding was very interesting as in they're really timely, because if you're going to do 6.5% to 8.5% growth, you need a decent shipbuilding industry, and China is number one, so you need good shipbuilding. Our aviation is very exciting because it's possibly the traffic is going to be doubling in the next 5 years or so. So all of those things are there, and even the agricultural parts, especially the Pulses mission, I really, really liked it. Apart from the obvious, this whole thing about being part of the global supply chain and a resilient supply chain, all of them, all the puzzle pieces, if you see them in that light, it shines even more than the very obvious last over big hitting that has happened. And if I add one thing to what Udayan is saying about the Pulses mission, at this moment when we are importing large quantity of pulses as well as the edible oil, so there is always a fear of imported inflation because of the weakening of rupee. And if you are going to focus more on higher production of pulses as well as the edible oil seed, that is going to bring down that pressure on the rupee, which is maybe immediately, not in the short run, but in the medium run as well as in the long run, that is really going to help. Sorry, I just thought that I will add one. शिशिर, मैं आपका ध्यान फिर से वो मध्य वर्ग के खासतौर पे जो आयकर की जो अभी नई स्लैब आए हैं उसके बारे में कुछ विस्तार से अगर आप बता सके। देखिए, एक चीज उसमें अभी भी मेरी नजर पड़ी कि मार्जिनल रिलीफ भी दिया गया है। अगर आपकी आय कुल आय 12 लाख से थोड़ी सी ही ऊपर होती है तो उसमें भी
रिलीफ की बात है, इसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए कुछ समझाएं। देखिए, दो बातें समझनी होगी। एक तो साफ हो गया है कि पुरानी जो कर व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, वो अब धीरे धीरे फेज आउट हो रही है। वो कब होता है ये अभी कहना मुश्किल है, और हो सकता है जब हमारे पास न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड का जो बिल अगले सप्ताह आएगा उसमें शायद इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण हमें देखने को मिले। अब जो आपका मूल सवाल है नए वाले में, अगर आप पुराने वाले टैक्स स्लैब को देखें जहां पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लैब थे, अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक स्लैब ऐड हो गया है। वो है 20 से 24 लाख का, जहां पर 25% के इनकम टैक्स की बात है। देखिए, ये हमेशा से मुद्दा रहा है कि आपने अगर जो मिनिमम स्लैब दिया है वहां से 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो आपका, जिसको कहते हैं ना कि टैक्स का मीटर चालू हो जाता है। और टैक्स का मीटर खासतौर पे जहां पर 5, 20 और 30 हुआ करता है ओल्ड टैक्स रिजिम में, वहां पर ये ज्यादा चुभता है। इवन कि नए टैक्स रिजिम में जहां 5 से आप 10% पे आ रहे हैं या 10 से 15% पे आ रहे हैं, तो 1 रुपया का भी बढ़ना आपके लिए नुकसान करता है। तो ये पिछले समय भी ये बात कही गई थी कि अगर जैसे ही आपका 27,000 रुपए तक इनकम बढ़ता है, मान लीजिए कि स्लैब अगर 0 से 4 है या मान लीजिए कि 12 है, 12 लाख तक आपने कहा कि बिल्कुल हमारा 0 है, तो 12 लाख से थोड़ा ऊपर, अब ये थोड़ा ऊपर कितना ये डिसाइड किया जाएगा, लेकिन बीते समय का अगर मैं अनुभव देखूं तो वो 27,000 रुपए तक का था। तो हो सकता है कि इसी प्रोपोर्शन में कुछ इसमें बढ़ोतरी की जाए, ताकि आपको अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की थोड़ी बढ़ोतरी हो तो उसको आपको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेतन भोगियों के लिए 12,75,000 की बात है, क्योंकि उनके पास 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप हर स्लैब वाइज बेनिफिट देखें, वो काफ़ी ज़्यादा जो आंकड़े एनेक्सर 1 में दिए हुए हैं कि आपको हर स्लैब में कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है, ये लोग ये ना सोचे कि हमारी इनकम 14 लाख रुपए तो 12 लाख रुपए जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ना सोचे। आपको ये सोचना है कि 12 लाख एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो आपका मीटर चालू 4 लाख से होगा, ना कि 12 लाख से होगा। लेकिन जो उसमें भी एक फौरी तौर पर राहत ये है, क्योंकि पहले वो जो स्टार्ट होता था वो 3 लाख से होता था, अभी वो 4 लाख हो गया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि मीटर चालू कहां होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। Right. And before we take this discussion further, we have now been joined by Ashish Shankar, Vice President, Bihar Chamber of Commerce and Industry. Mr. Shankar, welcome to Akashwani's special program on the Union Budget. A lot of announcements today for Bihar in the Union Budget. What is your first reaction? How do you see these announcements? Thank you. देखिए, सबसे पहले तो ये बजट बिहार वासियों के लिए तो बहुत ही अहम रहा है। कोई भी ऐसे क्षेत्र नहीं है बिहार के जिसमें बजट में नहीं कवर किए गए हैं। खास करके बिहार भी एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में दिया गया काफी कुछ। मखाना के लिए इन्होंने बोर्ड की गठन की है, फूड पार्क की बात की है, IIT पटना के लिए इन्होंने डेवलपमेंट के लिए बात किया है, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए बात किया है, और कहीं न कहीं न्यूक्लियर पावर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में बिहार में लाने की भी बात आई है। और लास्ट जो बजट में अभी जो खास करके मध्यम वर्ग के लिए है, MSME के लिए है, जो बिहार में MSME ही काफी है, उसके लिए भी बहुत सारे स्कीम आए हैं, डबल किए गए हैं, बजट को भी डबल किया गया है। तो कहीं न कहीं मेरे को तो लगता है देश का नहीं, शायद बिहार का बजट है। ये तो काफी अच्छी बात कही आशीष जी आपने। आशीष जी, ये देखिए, बिहार की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उसको एक विशेष दर्जा दिया जाए। क्या जो बजट प्रस्ताव हैं उससे एज एक उद्यमी के तौर पे क्या आप ये मानते हैं कि उसमें बहुत अधिक मांगों को इसमें समाहित किया गया है, या उनकी मांगें मानने की तरफ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, हर एक साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपने सुझाव देता है, सुझाव मांगा जाता है, और बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो इस बार भी बिहार के चैम्बर की तरफ से गया है, जिसको लिया गया है। अगर आप देख लें, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि उसको एग्जाम किया जाए, उस पर एग्जामेशन किया गया है। इनफैक्ट इनकम टैक्स में जो स्लैब था, हम लोगों ने तो 10 लाख का ही डिमांड किया था कि 10 लाख हो, और उसमें भी एक राइडर हम लोग डाले थे कि अगर ना भी हो तो उस पर 5% टैक्स लिया जाए, लेकिन उन्होंने 12 लाख पर इसको लेकर गया है। एयरपोर्ट के लिए काफी दिनों से हम लोग का एक डिमांड था, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, उसको भी इसमें समाहित किया गया है। तो ये कहीं न कहीं से बिहार को डेवलपमेंट के लिए हर एक को, हम तो बोलेंगे हर एक क्षेत्र में, कृषि हो जाए, हेल्थ हो जाए,
इवन टूरिज्म में बुद्धा सर्किट को पिछली बार भी लिया गया, इस बार भी चर्चा किया गया है, तो हर एक रूप से बिहार को इस बार बेनिफिट मिलेगा। जो बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की जो घोषणा की गई है, उससे कितना वहां पे टूरिज्म सेक्टर को या आम जनजीवन को भी फायदा होने की उम्मीद लगती है आपको? नहीं, देखिए, कोई भी एक एयरपोर्ट अगर डेवलप करते हैं तो उसे केवल टूरिज्म या आम जनता को ध्यान में नहीं रख के किया जाता है, व्यवसाय भी आज के डेट में यहाँ पे है। मैं एक चीज बराबर बोलता हूँ कि बिहार में 2 आइटम है, लीची और आम, जो एक पेरिसेबल आइटम होते हैं। इसका लाइफ सेल्फ लाइफ भी काफी कम होता है। अगर एयरपोर्ट होगा, कार्गो होगा, तो इसको हम जल्द से जल्द बाहर के मार्केट में भेजेंगे। तो केवल टूरिज्म नहीं, चौल और इसका विकास होता है, एक एयरपोर्ट खुलता है तो। जी, आशीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव सरकार ने माने और इस दिशा में आगे कदम बढ़ा। निश्चित तौर पे आपकी प्रसन्नता के साथ हम भी प्रसन्न रहेंगे। चर्चा के दौर को आगे शिशिर वही आशीष जी से आप बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहीं पे लेकर आना चाहूंगा। देखिए, अगर हम जैसे हमने वेतनभोगी कर्मचारियों की बात करी थी या आयकर में मध्यवर्ग की बात करी थी, उनको जो राहत मिली, इसके साथ साथ जो TDS यानी स्रोत पे कर कटौती की जो थी, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता सके कि उसमें कितनी राहत सीधे तौर पे दी गई है। उसके पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन विशेष औद्योगिक पैकेज की बात की जा सकती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप किसी भी खास राज्य की बात करें, बिहार की बात करें, चूंकि अब इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होंगी, हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन उसको उस फ्रेमवर्क में ही ये सारी घोषणाएं की गई हैं जिससे इस राज्य को फायदा होगा। जहां तक TDS की बात है, जहां तक मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो है ब्याज दर का। और देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें जमा को प्रोत्साहित करना है। आज के दिन में परेशानी ये हो रही है कि जमा नहीं आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्या लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, खासतौर पर जब ये चर्चा गरमाने लगी है कि लोग बैंकों की जगह शेयर बाजार में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया, वहां पर कोई फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन जमा को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए। और चाहे वो 1 लाख रुपया बुजुर्गों की बात हो और 50,000 जो कि 60 वर्ष से कम उम्र के लिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ तो हमने जमा को कम देखा और दूसरी तरफ जो सुरक्षित जो कहते हैं ना रकम, यानी कि मूल और ब्याज में ज्यादा बट्टा ना लगे, उसका इंतजाम इसमें किया गया है। दूसरा जो कि महत्वपूर्ण TDS का प्रावधान है वो आपका जो कि किराए को लेकर के जो 2,40,000 रुपए का था उसको बढ़ा करके 6 लाख रुपया किया गया है। ये आज व्यवहारिक है क्योंकि आप देखिए कि अगर बड़े शहरों में 50,000 रुपए के किराए की अगर बात करें तो एक डिसेंट कॉलोनी में आपके 40-50,000 रुपया एक अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हो जाता है। तो वहां पर इस तरह की रियायतें देना वो काफी फायदेमंद है। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। तो दोनों चीजें अगर आप देखेंगे कि रेंट बेस्ड जो हाउसिंग सिस्टम है और अफोर्डेबल हाउसिंग, इन दोनों को मिला करके देखिए तो रियल एस्टेट सेक्टर को काफी बेनिफिट हो सकता है। And now let's go over live where Defense Minister Rajnath Singh is giving his views on the budget. Let's listen into him. 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी कि ECHS को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग
19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिए। That was Union Defence Minister Rajnath Singh sharing his views on the allocation for the defence sector in the Union budget. And now let's see, we've been talking about all this while, Amit, Shishir and Udayan, since we started this second part of our discussion, about what kind of a relief the, middle income group and the salaried classes are getting in way of, by way of income tax rebates. So on the one hand, there is some kind of a cheer coming in from this sector, but if I'm looking at, how the markets are reacting right now, doesn't seem to be the case there, because benchmark domestic equities indices Sensex and Nifty slipped into negative territory in the afternoon trade today. The 30-share BSE Sensex lost 227 points to fall at 77,273, while the NSE Nifty 50 fell 110 points to be at 23,398 when reports last came in. And 15 out of 21 sectors were trading with losses, including capital goods, industrials, and oil and gas. Udayan, why is this kind of a reaction coming in? What is your assessment? Why is this kind of a reaction coming in from the markets? Well, I wouldn't be knowing what is bothering them. But Anubhav, one of the things that happens is budget is a very big document. It takes a while for the market to internalize the information. Yes. So they would be trying to understand whether the growth rate projections and things like that, whether these numbers, the integrity of the numbers. One is the number. These are proposals. Can the government actually do it? Then there would be events in the proximity. What's going to happen, say, in the US and other places? Sometimes there's also a thought process, yes, a belief, an expectation by market participants that certain things we need and we are going to get. And when that doesn't happen, it's like a teenager. You want something and it doesn't happen, and there's a bit of a tantrum. Okay, so that's one part of it. But having said that, if you look at the history of budget and stock markets, I would maybe wager a small bet that most of the times it has not done well. Yeah. Markets getting ecstatic. We saw that the last time also. Yeah. So what will be great for the equities in the financial sector? Budget is about the whole country, actually, yes, on all sectors. So sometimes that realignment and reconciliation takes a little bit of time. Right. चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन इस समय बजट पे अपने रिएक्शन देने के लिए हमारे समक्ष हैं अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल। उनका रिएक्शन लेते हैं बजट पे, वो उनकी क्या सोच है। हरसिमरत जी, पे चोन आ रही है, बिहार इसके बाद असम की आ रही है, तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी, वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लेकर गारंटी के किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड और किसान जो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं। इस तरह की बहुत सारी उम्मीदें जहां जैसे अभी भी आपने भी कहा था कि शेयर बाजार से वो एक चीज मैं जरूर और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आज शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में विशेष सत्र था, क्योंकि शनिवार को आमतौर पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होता है। विशेष सत्र था, तो क्या ये माना जाए कि उसकी वजह से जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं वो आज शायद सुस्त पड़े हुए, उसकी भी एक वजह है अगर बाजार में इतनी गिरावट है? मेरे ख्याल से एक बार और भी 2017-18 के बाद एक साल और भी था जब बजट शनिवार को आया था, तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। जो आपका मूल सवाल था कि बाजार क्यों इस चीज को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं है, देखिए जो आंकड़ों में जो बातें छिपी हुई, जैसे पूंजीगत खर्च की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई जैसे उम्मीद की जा रही थी। दूसरा एक आंकड़ा जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इस साल का जो इंटरेस्ट पे आउट है, जो टोटल एक्सपेंडिचर का 20% है, जो कि पिछले साल 19% था, तो 1% बढ़ना वो फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में नहीं लिया है। और तीसरी बात जो कि मुझे लगता है कि शेयर बाजार
जिस बात की उम्मीद कर रहा था बड़े पैमाने पर कि कैपिटल गेन के टैक्सेशन में कुछ बदलाव किए जाएंगे, वो नहीं हुआ है। तो ये 3 कारण शायद हो सकते हैं जिसकी वजह से शेयर बाजार में आप इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। पिछले वर्ष में 11,11,000 करोड़ का इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था पिछले साल का, वो इस साल तो कम होना है 2024-25 में। अगर आप देखेंगे तो जो 11,11 का था वो घट करके 10,18 हो गया, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। और इस साल का जो टारगेट है वो 11-21 का है। तो अगर हम 20 से कंपेयर करें तो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। हाँ, आरई से आप कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन सवाल यह है कि कई बार आंकड़ों को ना हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाने तो हम आरई से कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो बी वर्सेस बी होना चाहिए। तो 11-11 से 11-21 होना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाता है। शायद इस बात को लेकर के बाजार में एक थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज थी उनके लिए उस तरीके का फंडिंग नहीं हो। अमित, अगर 1 मिनट मुझे मिले तो कई बार क्या होता है अमित, आप जब बाजार में हैं तो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है, और इसके और एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप अनलेस बजट प्रपोजल का उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसके बही खाते हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें अगर कैप्चर नहीं हो पा रहा है तब तो मुश्किल है, फिर तो बाजार उठ नहीं पाएगा। क्योंकि उसको देखना है, निवेशक को ये देखेगा कि उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कि कुछ और आने वाला है, कुछ फायदे होने वाले हैं, और वो नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए अगर सड़क बन रहा है और कोई कंपनी, अगर सरकारी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी बना रही है तो उसका क्या स्टॉक मार्केट लेगा। अगर R&D हो रहा है उसमें तो कभी भी, अगर आपके कंपनी में नॉलेज है, स्टॉक मार्केट कभी भी उसको वैल्यू नहीं करता, जबकि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रिएट कर रहा है फ्यूचर इनकम को। स्टॉक मार्केट उतनी तवज्जो नहीं देता है जितना इमीडिएट बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में जो होता है। तो वो जब हम इस चीज को देख रहे होते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। उदिन, जैसा कि अभी शिशिर जी ने कहा कि आपने खर्च किया 1,10,000 करोड़ के करीब, और आपके पास पिछले साल से 1 लाख करोड़ के बचा 10,000 करोड़ की, यहाँ पे आपने उसमें बढ़ोतरी भी करी। बी वर्सेस बी, अगर आप सरकार की बात करेंगे ना तो वो आरई से करेंगे। वो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। मैं एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते कर रहा हूं। जब सरकार के आला अधिकारी आएंगे तो वो दिखाएंगे कि हमने कैपिटल खर्च में कितना, पूंजीगत खर्च में कितनी बढ़ोतरी। मैं आशावादिता के तौर पर ही आपसे पूछता हूं अभी कि क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ढांचागत सुविधाओं पे जो खर्च बढ़ाने की बात थी, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद थी, वहां कितना सहमत हैं आप? अब आप एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पे बताइए। नहीं, देखिए 11-21 कम नहीं होते हैं। 11.21 लाख करोड़ रुपए की रकम कम नहीं होती है। और अगर मैं इसके राज्यों को मिलने वाले जो अनुदान है उसको भी जोड़ लूं तो ये 15-16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, जो रकम छोटी नहीं है, अच्छी रकम है, बड़ी रकम है। और खासतौर पर हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो गुणात्मक प्रभाव है, जैसे कहते हैं कि पूंजीगत खर्च अगर आप 1 रुपया करते तो उसका असर 4 रुपए तक का दिखता है। तो आप अगर 15 लाख करोड़ रुपए की खर्च की बात करें, 15.5 लाख करोड़ रुपए खर्च की बात करें, तो आपको 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा दिख सकता है। इसमें बिल्कुल असहमति नहीं है। जो शेयर बाजार के संदर्भ में जो आंकड़ों में वो जो ढूंढ रहे थे उसका मैंने जिक्र किया, लेकिन हाँ, एक सामान्य एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते इतना कह सकता हूं कि 15 लाख या 11,21,000 करोड़, और खासतौर पे आप बजट का आकार देखें, बजट का आकार हमारा जो है वो 50 लाख करोड़ रुपए का है, 50.65 लाख करोड़ का। उसमें अगर 11-21 है तो ये 20% से ऊपर की रकम है, जो छोटी रकम नहीं है बिल्कुल। और बीते साल से लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बीते वर्ष इस मौजूदा कारोबारी साल में, चूंकि पहली तिमाही में आचार संहिता की वजह से बहुत सारे खर्च नहीं हो पाए थे, तो इस साल में यानी कि 2025-26 में आने वाले कारोबारी साल में खर्च में आप बढ़ोतरी देखेंगे। और हो सकता है कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट आएगा, जो कि दिसंबर में आएगा, तो उसमें इसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी होता हुआ हम देख पाएंगे। अच्छा, एक इसके साथ ही, जैसे जिस तरह से कि कस्टम ड्यूटीज में या जो सीधे तौर पे नहीं, जो परोक्ष तौर पे भी फायदे दिए गए हैं, क्या हम उसको भी मान सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो लागत है उसमें तो कमी आ जाएगी। मेरे ख्याल से 2 बातें हैं। एक, अगर व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि
जो लाइफ सेविंग ड्रग और कैंसर ड्रग्स में जो बदलाव किए गए हैं, जो छूट दी गई है या बिल्कुल सीमा शुल्क खत्म किया गया, बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां तक उद्योग की बात है, मुझे लगता है कि जहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो चेंज किए गए हैं, चूंकि उद्योग की सबसे बड़ी मांग यही रही है, और अब आपके श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कच्चे माल पे आपको ज्यादा है और तैयार माल पे कम है। जब तैयार माल पे कम होता है जो अपने देश में बन रहा है, तो बाहर का सामान सस्ता पड़ता है, वो डंपिंग शुरू हो जाती है। तो ड्यूटी इन्वर्जन को खत्म किया जाना या उसको कम किया जाना इस बजट के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक बड़ा फैसला है, जिसका फायदा जो है उन्हें मध्यम से लंबे अवधि में मिलेगा। Udayan, if we talk about one other sector which has received which has been in the focus in this budget is the manufacturing sector. The government has announced the setting up of a manufacturing mission, and there is a slew of announcements so far as the MSMEs are concerned, some of which include that the investment limit for classification of MSMEs has been enhanced to 2.5 times. The turnout limit has been doubled to 2 times. Then the current credit guarantee cover for micro and small enterprises has been enhanced to 10 crore. And there is also startups. For startups, there is a credit guarantee cover boosted to 20 crores. And for well-run exporter MSMEs, the limit for term loans has been enhanced to 20 crore rupees. If you look at these measures, अनुभा चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ और बजट पे रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शीतल कालरू। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किस तरह से बजट को देखते हैं आप? अनुभा, ये बजट काफी ही पॉजिटिव बजट है। ये बजट विकसित भारत की तरफ प्रोग्रेसिव हो रहा है। इस बजट में महिलाओं को, किसानों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है, सबको ओवरऑल नजर में देखते हुए काफी ही ध्यान दिया गया है। विशेष तौर पे महिलाओं के लिए कितना बेहतर बजट आपकी नजर में है? महिलाओं के लिए ये काफी ही बेहतर बजट है। अगर आप देखें तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे काफी फोकस दिया गया है और उनको 5 साल तक लोन की सुविधा दी गई है। जो विमेन स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए स्कीम्स किया गया है और ओवरऑल भी जो उनके संतुलन है उस पे ध्यान दिया गया है। उनके चाइल्ड न्यूट्रिशन पे, जो बालवाड़ी है, सब पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव होलिस्टिकली ध्यान दिया गया है। Ms. Kalru, thank you so much for joining Akashvani. That was Sheetal Kalru, DDG, IMC Chamber of Commerce. Udayan, I was coming to you. So when we look at the announcements that have been made for the MSMEs, because manufacturing is one sector where the government really wants to make India the hub of manufacturing. That's the aim, stated aim of the government. So how do you look at these measures, these announcements that have been made, especially, for MSMEs? Well, it's important to understand there were MSMEs and SMEs when we were growing up, and there are MSMEs which are happening now. So if there was a manufacturing where a person will take a hammer and that old visual that we used to have, it's becoming more evolved. It's becoming more skill based, and here what's going to happen is when you're producing something, you're not producing for India, you're producing it for the world. Yes. Sometimes somebody is coming and you're going to have a JV, then those MSMEs are part of that ecosystem. So there is no sidestepping things like quality, good manpower. So when you're doing that, you need to do all of it. If you're going to do all of it, then you would need to make some of these changes which are already happening, which were announced today, and the internship or the apprenticeship kind of suggestions or proposals or points that came out in the last budget. So those things will have to go hand in hand when these things are happening. So I think when seen from that perspective, the fact that we want to become a manufacturing hub and we want to tap the current situation that's going on in China, and the fact that many countries are looking for another. We want to become an alternative, China plus one. Yeah. So
it is important for us to do it. Now, is this enough? That's the jury would be out. But there are countries like Vietnam who are doing splendidly well. Yes. So even something like these mobile phone assemblies that we are talking about, if you look at it in great detail, you'll find some of the challenges that I'm talking about are getting confronted right there. So we have to take all those steps to address such issues front and center. उदयन, ये जो MSME के लिए जो क्लासिफिकेशन बदला गया है, मतलब निवेश की सीमा को तकरीबन 2.5 गुना बढ़ाया गया है और जो उनको टर्नओवर की सीमा थी उसको 2 गुना किया गया है। इसके क्या फौरी फायदे हैं और क्या मायने हैं? अगर हम ये बात करते थे कि माइक्रो में जहां पे 1 करोड़ और 5 करोड़ की जो सीमा थी, मतलब निवेश की सीमा 1 करोड़ और 5 करोड़ की जो टर्नओवर की सीमा थी, व्यापारिक सीमा थी, अगर वो बढ़ के 2 करोड़ और 10 करोड़ होती है, 2.5 करोड़ 10 करोड़, जी 2.5 करोड़ और 10 करोड़ होता है, इसके क्या फायदे सीधे तौर पे मिलते हुए नजर आते हैं और कितना बूस्टअप होता है? क्योंकि इसमें पूंजी कैसे मिलेगी वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी जी, देखिए एक मिनट, एक पल भर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि इसमें सीमाएं क्या थी। आप अगर मैं बैंकर या आप बैंकर हैं, आप मेरे को पैसे लेंड करना चाहते हैं, अगर मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे घर में खरीदने, होम लोन के बारे में तो श्रोता जानते ही होंगे, तो जितना आपका अमाउंट बढ़ जाता है, जितना मैं स्टेक ज्यादा अपना मार्जिन डालूंगा, बैंकर जो है वो उतना कॉन्फिडेंट होगा आपको डालेगा। कई जगह नहीं होता तो कोलैटरल मांगा जाता है। तो एट अ ब्रॉड प्रिंसिपल लेवल ये होता है कि अगर मैं कुछ लंबी छलांग मारना चाहता हूँ, मेरे जो आकांक्षा है, एम्बिशंस आर लार्जर, फिर वो छोटे छोटे लिमिट्स में वो बात हो नहीं सकती। और इसको आप देखेंगे अगले कई बार जब प्रोग्राम्स होंगे ऐसे जिसमें शायद हम और आप हों या ना हों, उसमें ये लिमिट्स रिवाइज होते ही चले जाएंगे। जी। And now let's listen to the reaction, one reaction coming in. That's Shashi Tharoor from Congress, who's, let's listen to his reaction to the union budget. बात है, इसलिए भाजपा के लोग बहुत ताली बजाएं, लेकिन ये भी जानिए कि अगर आपके पास तनख्वाह है तो आप कम टैक्स देंगे, लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं है उनके पास तनख्वाह कहाँ से है? रोजगार नहीं है, ये एक आम बात थी। अच्छा, अब वापस से मैं वही एमएसएमई पे आता हूं। अगर एमएसएमई की जो टर्नओवर की सीमा बढ़ा जाती है तो ये रोजगार उत्पन्न करने में, रोजगार बढ़ाने में कितना सहायक होगा? जैसे अभी उदय ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बैंक ये देखता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। तो जैसे माइक्रो में पहले जो इन्वेस्टमेंट का सीलिंग था, जो निवेश की सीमा थी, वो 1 करोड़ पे थी, जो अब 2.5 करोड़ है। उसी तरीके से जो छोटे हैं वहां पर 10, जो कि अब 25 हो जाएगा, और जो मझोले हैं उनके लिए 50 से बढ़कर के 125 हो जाएगा, यानी कि 2.5 का यहाँ पे मैट्रिक्स है। और अगर कारोबार यानी कि कुल टर्नओवर की बात करें तो 5 से 10, 50 से 100 और 250 से 500 करोड़ पे। देखिए, एक बात साफ है कि आप अगर कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूंजी चाहिए, और बैंक आपको ज्यादा पूंजी उस आधार पर देता है कि आपने ज्यादा निवेश किया है। कारोबार क्यों बढ़ाएंगे? यानी कि बाजार में मांग है, और कारोबार जब बढ़ाएंगे तो लोगों को आपको नौकरियां देने की जरूरत होगी। जब हम कहते हैं कि 36%, 40% नौकरियां जो है वो एमएसएमई के सेक्टर से आती हैं, और वहां पर अगर इस तरह की बढ़ोतरी होती है जहां पर आप 40, 45, 48% आप मैन्युफैक्चरिंग में योगदान कर रहे हैं, तो इस तरीके की सीलिंग का बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कारोबार बड़ा होगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, और ज्यादा लोग आएंगे तो रोजगार के मौके बनेंगे। अगर जैसे 250 करोड़ से की सीमा को बढ़ा के 500 करोड़ किया गया है, तो अब पहले वो बड़े उद्योग में आता था, तो वहां पे और एमएसएमई में दोनों के बीच में फौरी तौर पे क्या फर्क था जो अभी मिलना शुरू हो जाएगा 500 करोड़ तक की टर्नओवर वाले को? अगर आप बाहर के देशों में देखें, जब आप बाहर के देशों से कारोबार करते हैं, जब निर्यात करते हैं, तो वहां पर आपका स्केल अगर छोटा होता है तो वहां पर आपके लिए कई तरह की जो जैसे कहना कि संपर्क बनाने में, संबंध बनाने में दिक्कत होती है। आप जर्मनी का उदाहरण देख सकते हैं कि वो जर्मनी हमारे लिए एग्जाम्पल है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पे, और वहां पर अगर आप लिमिट देखेंगे जो काफी ज्यादा है, तो हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे पास निवेश और कारोबार दोनों की सीमा बढ़ जाएगी, हमको सहायता भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र हो या फिर विदेशी व्यापार के मामले में है। इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा अपनी प्रतिस्पर्धा की ताकत को बढ़ाने में मदद, और शायद सरकार से जो पूंजी जुटाने की जो क्षमता है और जो लागत में कमी करना है, उसमें सीधे तौर पे कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर आप संगठित क्षेत्र से पैसा उठाते हैं तो आपके लिए लागत कम करना आसान है। अगर आप असंगठित क्षेत्र से, इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? जो टाइनी यूनिट्स है, बहुत ही छोटे हैं या माइक्रो हैं, जिनको
मदद अगर नहीं मिल पाती है तो वो असंगठित क्षेत्र में जाते हैं जहां पर उनको अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये उसकी लागत कम होगी तो उनकी प्रतिस्पर्धा पे असर पड़ेगा। Now let's take one more reaction. This is the reaction of Priyanka Chaturvedi, MP Rajya Sabha. She's from Shiv Sena UBT. So let's listen to what she had to say about the union budget. People of the country have finally been heard by the finance minister, especially the middle class, which had been repeatedly asking for some relief, some tax burden relief, because their salaries were not increasing while their tax burden was increasing. Inflation was ensuring that they had no savings left, no investment opportunities left for them. That has been taken care of or heard of, and we're hoping that in the coming time she will continue to hear the voice of the people and do things which will push the economy forward, push the savings and investment. That was Priyanka Chaturvedi talking about the tax relief that has been announced in the budget. Then I want to draw your attention to another announcement, that is the FDI limit in insurance sector has been raised from 74 to 100%, of course, with some conditions. Now, when we look at, when we talk about investments, when we talk about economy, FDI is very important, for the economy to prosper. So how do you look at this? Because that has been a demand for a while now that, the limit of FDI be increased, especially in the insurance sector. Well, I'm sure that there must be many thoughts that have gone behind it, and the reason for demand. But one of the things I can think of, that can help, will be helpful, is there would be many companies who are not operating in India simply because they'll have to do a JV and we have been evolving. And that's a good part of being a democracy, because you need to take everybody along and you need to have an irreversible progression. Now, there are obviously many insurance companies, and they have very interesting products. For instance, in India, you don't have anything which is the long-term care insurance, as it is called. You save during your accumulation years, and when you get old, or let's say, the years go by, and you can address some of these health episodes that come in. Now, incidentally, health inflation is possibly double the general inflation on an average in India, in large cities. So these things become important. So and then they bring with them their expertise, their technology, and we are very underpenetrated in life insurance. Now government schemes have come about. They need to also get pushed. LIC is obviously a marvelous. I mean, I'm personally a fan of LIC, but apart from that, there's only so much of heavy lifting that one megalith can do. But these are possibly some of the things that can happen. The foreign collaborators in JVs, they might take more interest. It can do with a lot more capital infusion, because you need to penetrate more and you need capital for that. हमारे साथ बजट पे अब कुछ और बाइट्स ले लेते हैं, किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बजट प्रस्तावों पे क्या कहा, सुनते हैं। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गरीब, महिलाएं, युवा और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का ये बजट है। एक दूरदर्शी बजट जिसमें समाज के हर वर्ग के साथ साथ हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। That was Shivraj Singh Chauhan, Union Agriculture Minister, giving his reaction to the union budget. Shishir, the budget has also talked about providing broadband connectivity at all government secondary schools and primary health centers in rural areas through the BharatNet project. Now, the digital divide in rural and urban area is one area, a lot has been talked about it, and that is something which is very, is there. So how far would this particular announcement go in addressing this digital divide between rural and urban area? And it will also add to the rural development. I think it's a very good decision to provide this kind of facility in all schools, whether we are in the urban area or in the rural area. I mean, we are living in Delhi. So in Delhi, if you talk about central Delhi and surrounding area, their infrastructure may be good. But if you go to the rural area of this national capital, there may be some sort of issues there. So if we are talking about providing this kind of broadband connectivity and some kind of facilities on that,
when we are talking about new education policy, further enhancing the educational system, this is a very good announcement, and I'm sure that there will be more expenditure on the education too, because there has to be raised to 5% of GDP. I believe we will have to go to the fine prints of the education expenditure, and that will also add to the overall improving the educational system in the country. शिशिर, अब बात करते हैं रेल बजट पे, जिसपे कि बहुत सारी खबरें ऐसी थी कि रेल बजट में रेलवे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी पूंजीगत व्यय के लिए उनको बड़ी राशि मिलने की, उनकी उसमें बढ़ोतरी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। अगर टोटल उनका देखते हैं तो जो टोटल पूंजीगत व्यय था उनका 2,55,200 करोड़ था, जो पिछले साल के बजट अनुमान थे उसको जो संशोधित किया गया उसमें भी इतना ही रहा, और फिलहाल भी 2,55,200 करोड़ रुपए है। अब इसमें आपकी बात जोड़ता हूं कि पिछले 3 महीने जो कि चुनाव के महीने थे जिसमें खर्च नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इसको इसलिए रखा है, ये कह के तसल्ली करूं, पहली चीज। दूसरी, अगर इसके जो फाइन प्रिंट्स जैसे आप हमेशा कहते आए हैं उसमें मैं देखूं तो जो सिग्नल और टेलीकॉम वर्क्स में है उसमें जबरदस्त उछाल है। 4,647 करोड़ के बजट प्रस्ताव थे पिछले वर्ष, उसको संशोधित करके 6,006 करोड़ किया गया, अब की बार 6,800 करोड़। चूंकि सिग्नल और टेलीकॉम ये पूरी तरह से रेलवे की सेफ्टी से रिलेटेड काम इसमें आते हैं, इस बारे में कुछ बताइए कि कहां सरकार दिशा देने की जरूरत देखती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखें 3 जो बड़े खर्चे पहले होते थे पूंजीगत में, वो ये थे कि नई पटरी बिछाने के ऊपर या पटरियों में जो बदलाव किए जाते थे जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज पे जाते थे, और उसके अलावा डबलिंग ऑफ लेन्स। इन तीनों के खर्च में अगर आप देखें तो कोई बढ़ोतरी नहीं है। आमतौर पर ये माना जाए क्योंकि भारतीय रेलवे इस बारे में बहुत अच्छा काम कर चुकी है। वही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ के बजाय अगर आपने सुरक्षा पर और संरक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया है वो महत्वपूर्ण है। तो भले ही ये रकम आपको 2,55,200 करोड़ पे स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सिग्नलिंग पे, टेलीकम्युनिकेशन पे, सेफ्टी के मेजर्स पे, इन सब पे अगर खर्च बढ़ाया जाता है रादर देन कि आप केवल पटरियां बिछा दें या पटरियों का दोहरीकरण कर दें या ब्रॉड गेज नैरो गेज से ब्रॉड गेज पे चले जाएं, मुझे लगता है कि उस दिशा में काफी हद तक काम हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से देखा जाए तो क्योंकि जो गेज कन्वर्जन के काम थे वो लगभग समाप्ति हैं, और जो भारतीय रेल में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने काम था वो भी काफी हद तक हो चुका है। तो अब बचता है कि अपनी एग्जिस्टिंग लाइन कैपेसिटी को एनहांस कैसे किया जाए, उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, उसके लिए इन मदों पे ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि एक खर्च जो है जिसको रोलिंग स्टॉक को लेकर के भी काफी चर्चा होती रही है कि काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और जिस तरीके से नए तादाद में वंदे भारत, अमृत भारत और सारी ट्रेन आ रही है, वहां पर भी 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च एक मायने रखता है। हालांकि अगर आप बीते साल से तुलना करेंगे तो उसमें बहुत बढ़ोतरी होते हुए नहीं है। Then we are shortly to go into a break, but before that, at the beginning of discussion when we started the second part, you said that there are announcements here which are very significant, which have somehow got eclipsed by the tax rebate. So which are the announcements that if you can quickly tell us the important announcements? I really liked the oils, rather the pulses. Then there's something to do with cotton. That has been announced. There's something to do with Kisan credit card that has got announced. There's urea that has got announced. There's something about involving at private sector in atomic energy, which is quite mind blowing. Then aviation industries. There have been, especially what I liked was the mention about Northeast. Yes. So there are many more. But these are some of the things that are top of the mind recall. And what would you say about the announcements that have been made for gig workers, especially? Very quick comment. That is so much needed, and the states have been front runners in that. It's great that these people are getting protected. They need that protection very badly. So you are listening to the special program brought to you by Akashvani on the Union Budget 2025-26 that was presented today by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, and we will continue with this discussion later in the day as well. But we will be back
with you at 2:30 p.m. That is after the Urdu bulletins and followed by English and Hindi bulletins. We will have a new set of presenters and new experts to give you more insights into how the union budget has, come up to the expectations of the people. और चलने से पहले हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों को, शिशिर सिन्हा और उदयन रे, आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे श्रोताओं को बजट की बारीकियां इतने सरलता से समझाने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पे बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी उम्मीदें पूरी हुई, बहुत सारी उम्मीदें शायद अभी पूरी होनी बाकी है, समझना बाकी है। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल इस बजट विशेष परिचर्चा को यहीं अल्प विराम देते हैं और जैसा कि अनुभा ने बताया कि 2:30 पे उर्दू बुलेटिन के तुरंत बाद हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नई प्रेजेंटर्स के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ